Hello all, good evening. We welcome you all to the TSL match, the Super League, happening at the Fatima Cricket Ground. The first ball has been bowled, and that's a single taken by Nikesh, who's off the mark, Nikesh Patani. And we're having two wonderful teams locking horns today in the TSL, the Super League, and this is your commentator Shalin Gupta welcoming all the viewers and spectators once again to a wonderful match in the Super League. And this match is between Ace Global and the Skyhawks. Both the teams are really strong, and the news from the center is that Ace Global have won the toss. They've elected to field first, and Skyhawks have been asked to bat first. The first over is being bowled by Dhanraj, who started off well. Nikesh Patani and Sufyan Sheikh are the opening batsmen for the Skyhawks. That's a short delivery, trying to cut that but not succeeding. A dot by Dhanraj. And this is another match happening at the Fatima Cricket Ground, the TSL. It's a very popular tournament, the Super League. And Dhanraj coming into bowl his next delivery. On strike is Sufyan. That's a good one. And cut really nicely, and a quick single taken by both Nikesh and Dhanraj. There's a backup there as well. That's a good start by both the teams. Skyhawks 2 without loss. This is just the first over. We welcome all our viewers once again who have been watching this tournament right from the first match, and for the viewers who have joined this tournament from this match, a wonderful match is happening between the Skyhawks and the Ace Global. Dhanraj coming into bowl his next delivery. He's bowled well till now. Oh, and that's a bouncer. Trying to extract some bounce there. Almost a bouncer there. And we've got some really good players in the Ace Global squad. Jitesh Purabia, one of them, the one that you just saw on your screen, fielding at point, and one of the best batsmen, one of the best batters in this tournament. And how well did he play in his first match? Just went berserk. Oh, and that's a good delivery. He was expecting a wide there, but that was just not a wide. That was a wonderful delivery, pitching it slightly up in the good length area and moving it away from the right hander. That's a good bowl by Dhanraj. Has bowled some really good deliveries in this over. That was the best of the lot till now. This is just the first over in this match. Oh, and that's a wonderful delivery again. He was trying to hit the big one, but the line of delivery was perfect. Almost getting the edge there. There's a slip in place as well. So that's a good piece of bowling by Dhanraj. That was a wonderful ball. Completely beaten there, Nikesh, and the first over has been bowled 2 without loss after 1 over. That's a wonderful start by the Ace Global bowler, Dhanraj. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. We'll be right back. And that's a boundary to start the second over. Aditya
Starting off with a wide, that's a poor delivery down the leg side. Coming into ball is next delivery, Aditya. Oh, and that's a good one. That's a wonderful shot as well. Should be a boundary here. No chance for any fielder. What a start by Sufyan Sheikh. That was a wonderful shot and brilliantly played. That was a wonderful shot played. The sweeper cover region for a boundary. What a shot that was by Sufyan Aditya. Pulling a good delivery this time. Coming back sharply into the batsman. But that is not a good start by Aditya. 5 runs given on his first delivery and then a boundary. Comes back nicely with a dot, but a lot of runs already scored in this over. 9 already in this over till now. Oh, and that's a wonderful piece of bowling, but well played by Sufyan as well. He waited till the end and then hit the late cut. Just have a look at that. Oh, and how good that anticipation from the batsman was. I'll show you the replay once again. That did come back really well into the right hander, but how well did he play it? I'll show you the replay in the slow-mo. Just have a look at that. Brilliantly played by Sufyan. Playing really late, waiting till the end and coming to bowl his next delivery, Aditya. Oh, in the air! Could be a big one. It is a big one. What a shot that is. Huge 6. First of the match by Nikesh. Absolutely brilliant batting. That was pitched up and he was very quick on that. What a shot that is. Just hitting it with the flow and a huge 6 straight down the ground. Brilliant batting this by Nikesh Patani. What a start Skyhawks have got here. Courtesy both these opening batsmen. Oh, and that's a good delivery. Bringing the ball back sharply into the batsman, but the damage has already been done in this over. A lot of runs already scored. 16 already of that over and 1 delivery is still to go. So Aditya very expensive in his first. The score 18 without loss already in the second over. And it is Ace Global who have asked the Skyhawks to bat first. So they need to bowl well here, as they would be the ones who would be chasing. That's a good delivery again. Learning from his mistakes, Aditya, and bowling nicely. The last 2 deliveries of that over were bowled really well by Aditya. That's the end of the second over. 19 without loss after 2 overs, and both the batsmen are playing really well. Nikesh 8 of 7 and Sufyan Sheikh 6 of 5. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Dhanraj coming into bowl is second over. Oh, and that's a wonderful piece of bowling again. He's bowling some really good outswingers there. Wonderful piece of bowling by Dhanraj, and Nikesh completely beaten once again. Just have a look at that. He's bowling in the right length and moving away from the batsman. Right towards the end of that delivery.
Oh, and what a shot that is. Wow. Brilliant shot played by Nikish. Absolutely stunning piece of work there. Just have a look at that. Just bounced onto that bouncy delivery, but what a shot. Wonderfully played over and above the point fielder for a boundary. Brilliant batting this is by Nikesh. No chance for any fielder out there, just a spectator, the sweeper cover fielder. What a shot that was, probably the shot of the evening till now. Dhanraj coming in with his next delivery. Oh, and that's a good one. Pitching it up and nicely played by Nikesh with a straight bat and a single taken easily by him. This is really good batting by Nikesh. Dhanraj bowling well. But what a shot that was, the previous one. Which went to the boundary. Just have a look at that. Brilliant stuff there by Nikesh. Was really quick on that. Slashed it brilliantly and it went to the boundary in a flash. Coming to bowl his next one, Dhanraj. And Sufyan coming down the track. What a shot that is. Could be a boundary. Will be a boundary. This is brilliant batting by both these batsmen. And the opening pair coming really good here for the Skyhawks. Coming down the track, just walking down a couple of steps and a boundary scored by them. This time Sufyan coming into the act. What a shot that was towards the cow corner. No chance for any fielder once again. Oh, and that's a good delivery, and he was trying to scoop that. Almost did a Josh Butler there, but unfortunately could not connect. And that was a good delivery by Dhanraj as well. Changed the line of the delivery right at the last moment, and that's a dot one this time by Dhanraj. One delivery still remaining in the third over. The score is 28 without loss. Oh, and this time coming down the track, trying to hit the big one, but missing it completely, almost getting the edge there. That was a wonderful piece of bowling, and at the end of the third over, just have a look at the replay there. Comes down the track, and oh, and that was really close. He's missed it by a whisker, Dhanraj, but that was really good bowling and a good comeback by the pacer after being hit for a couple of boundaries. That's the end of the third over, and the score is 28 without loss after 3. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. That's a good ball, but that is slightly wide and a wide signal. Jitesh Purebia is being introduced into the attack. Not a very good start. However, that was a delivery outside the off stump.
So 2 runs on the first delivery. Jitesh Purabia, that to a wide, so he'll have to bowl that again. Not a good start by him. And just to the pleasure of all our viewers, we would like to inform that in the TSL we do bring the Hindi commentary as well. Oh, and what a shot that is by Sufyan. Walks down the track. And a couple of bounces into the fence. Brilliant shot towards the extra cover region. Stunning bit of batting this. That was a poor delivery. A short one asking to be hit. And a wonderful shot by Sufyan. Just have a look at that. What a shot that was. Absolutely stunning stuff there. Not a good start by Jitesh Purabia. 6 already of the first delivery that he is bowled legitimately. Oh, another good shot this time. Hammered towards the deep point for a boundary again. What a shot that is by Sufyan. Jitesh Purabia being dealt severely by the batsman here. What a shot that was cut brilliantly towards wide of point and a boundary there. There was a sweeper cover, but no chance for him to stop that. Brilliant stuff. Oh, and that's a wide. Another single taken, so 2 runs given again by Jitesh on a wide. Has been a poor start by the pace bowler. A wonderful all-rounder this guy, but today seems to be not the best of the days for him till now. This is just his first over. He's given a lot of runs here. Already 12 of the first 2 deliveries. Oh, and that's a good shot again. Punched brilliantly towards the covers. And that's a boundary again. What a brilliant piece of batting this is by Nikesh and Sufyan. This over has been brilliantly played by both these batsmen, and look at the power in that punch. The bottom hand coming into picture again. Wonderful piece of batting by Nikesh Patani here. What a start by him, and this is the 3rd boundary in this over. So what a start by Nikesh and Sufyan. Already 16 of this over in the first 3 deliveries that he's bowled. Brilliant batting this by both these players. All of a sudden the score has raised to 44 without loss. Jitesh, that's a good delivery, good comeback by him. In the air, that was edged, and that's 4 again. Another boundary, and this is a very expensive over. 20 of that over already, and this time some lucky runs for Nikesh. But runs are runs no matter how they come. That was edged, and the thick edge takes the ball to the boundary in the 3rd man region. Jitesh bowling his last delivery of this over. Oh, and this time played in the air deliberately again. Will be another boundary. What an over this is. And that's the 50 up in just the 4th over. 24 of that over. Such an expensive one by Jitesh Purabia. His first. 4 overs, 52 without loss. What a start by both these players. And Nikesh Patani is on fire. 25 of just 14 deliveries. Wow. Sufyan also playing a wonderful knock till now. This is stunning batting by both these players. 52 already in just 4 overs. 18 of 10 deliveries.
Mahesh coming into bowl this first over. What a start this is by Sufyan. Will that be a catch? No, it seems. Oh, and what a stop that is. Wow. This is amazing stuff. We haven't seen anything of that sort. And what a throw that was. Just have to look at the replay here. What did he do there? Just have a look at that. Oh, absolutely stunning piece of work there. This is absolutely stunning work there, and you got to give it to the fielder there. Just have a look at that. And this is one of the best efforts that you will ever see on a cricket field, no matter what kind of level you are watching or playing. Oh, and that is seriously brilliant stuff there. And look at the throw as well. Brilliant stuff there by the fielder. That was a wonderful shot by Sufyan Sheikh, welcoming Mahesh. In the air again, played deliberately, will be a boundary it seems. There is no fielder out there, and this will be a boundary. Oh, and what a wonderful stop that is. Stunning piece of work there by the Ace Global fielder. Just have a look at that. This is really high quality fielding by the Ace Global cricket team. Just have a look at that effort. Even. Oh, and that was so close, and that was a wonderful stop. You got to give it to the fielders here from AS Global and their coach as well. Mahesh with his next delivery. Oh, and that's a good one. Extracting some bounce out of that. No run taken this time. That's a good delivery again. A quick single taken by Nikesh and Sufyan. What a start by these two batsmen. The opening pair, 4.4 overs and 58 without loss. Jason Roy and couldn't have been a better start. Jason Roy and Alex. Oh, and that's a short delivery, pulled brilliantly towards the long on. Just a single. Mahesh has started well. This is his first over, just 7 of the over till now. And these two players, both the batsmen are in tremendous form, 26 of 16. Oh, and that's a wonderful shot. And will be a boundary. What a shot that is by Nikesh. He's on fire, this guy specifically. They're not able to bowl any line to him. Whatever they bowl to him, just have a look at that. A helicopter shot this time by him. He's just so good at that. We've seen him play this shot in the last season as well. And another expensive over because of that boundary for the Ace Global. And the score after 5 overs is 63 without loss. What a start by both these players. We'll take a quick break and be back soon. And we'll be back with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. Brilliant start by Skyhawks after they were being put into bat by Ace Global. Stay tuned, viewers.
स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का। हिंदी कमेंट्री में मैं शालीन गुप्ता आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ हिंदी कमेंट्री लेकर। मनोज का पहला ओवर, ख़राब शुरुआत वाइड के साथ, और क्या ज़बरदस्त शुरुआत की है स्काईहॉक्स के सलामी बल्लेबाजों ने, निकेश सूफियान शेख ने। 64 रन 5 ओवरों में, वाह! इससे अद्भुत शुरुआत तो हमने इस पूरे प्रतियोगिता में नहीं देखी। एक और वाइड और ख़राब शुरुआत यहाँ पर मनोज की, उनका पहला ओवर है पूरे स्पेल का, और ऐसी शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़े स्कोर को सामने देखना पड़ेगा 20 ओवर के बाद। और हर गेंदबाज की धुनाई हुई है यहाँ पर, और इस बार भारी किनारा और 4 रन। जी हाँ, भाग्य भी आज साथ दे रहा है स्काईहॉक्स का, ये हमने देखा है। बाहरी किनारे लग के गए हैं, और ये पिछले ओवर का शॉट दिखा रहे हैं आपको, तो चौका गया था, हेलीकॉप्टर शॉट खेला था निकेश पटानी ने। खतरनाक बल्लेबाज हैं दोनों, निकेश और सूफियान। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये 4 रन, एक और चौका, बेहतरीन शॉट। सूफियान शेख ने ऑफ स्टंप की तरफ आकर जगह बनाई शॉट खेलने के लिए, और जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये जगह बनाई थी, ऑफ स्टंप की तरफ शफल किया, एबी डिविलियर्स की तरह खेले थे ये शॉट। याद आ गई एबी डिविलियर्स की इस शॉट को देखकर। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की, और आप देखिए सूफियान शेख 32 पर आ गए सिर्फ 15 गेंद के बाद, निकेश 30 पर 17 गेंदों के बाद। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि सूफियान निकेश से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर तो आपस में ही एक लग रहा है युद्ध हो रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में कि कौन ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आगे खेलता है, आगे बढ़ता है। 5.2 ओवरों में 73 बिना किसी नुकसान के, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी। रन रेट देखिए 13.69 का रन रेट, वाह! और ये वाइड होना चाहिए। जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड का। और क्या दूसरे रन के लिए आएंगे? जी नहीं, एक रन ही लिया वाइड पर, तो 2 रन अतिरिक्त फिर से जुड़ गए स्कोर में। खराब गेंदबाजी मनोज की, अभी तक 2 गेंदें हुई हैं, सिर्फ 5 गेंदें डाल चुके हैं, 3 वाइड हैं उसमें। और एज ग्लोबल की गेंदबाजों से ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी, गेंदबाजी क्रम अच्छा है उनका, लेकिन आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते, और ये अच्छी गेंद, आखिरकार लगता है उन्होंने हमारी कमेंट्री सुन ली है। यहाँ पर बढ़िया गेंद डाली इस बार, ऑफ स्टंप के थोड़ी ही बाहर, और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास निकेश का, और चूक गए वहाँ पर। और ये एक और वाइड, ऑफ स्टंप के फिर से बहुत बाहर डाली है गेंद, चौथी वाइड इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी नहीं है ये, इतने अतिरिक्त रन देंगे तो अतिरिक्त गेंदें भी डालनी पड़ेंगी, और आप समय भी गंवाते हो, तो आखिरी के ओवरों में फिर आपको एक क्षेत्ररक्षक को इनर सर्कल में लाना पड़ेगा। और अच्छी वापसी, एक डॉट गेंद।
बेहतरीन शॉट, बड़ा शॉट हो सकता है ये। 6 रन, क्या बल्लेबाजी करते हैं, वाह। जबरदस्त प्रहार निकेश का यहां पर, बॉटम हैंड के धनी है। शॉट देखिए आप, ऊपर की गेंद स्लॉट में, और क्या जबरदस्त छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और क्षेत्र रक्षक के पास कोई मौका नहीं, सिर्फ दर्शक की तरह देखते रहे। बेहतरीन छक्का, और इस ओवर की समाप्ति हो गई आखिरकार। इतनी वाइड डाली थी कि लग रहा था कि कब खत्म होगा, लेकिन बहुत ही महंगा ओवर। 14, 2, 16, 17, 18, 19 रन का ये ओवर, 82 रन, और एक गेंद बची है अभी समाप्ति नहीं हुई है। और ये ओवर की समाप्ति हुई। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड समझकर छोड़ दिया, और वहां पर 6 ओवर के बाद स्कोर 82 रन बिना किसी नुकसान के। क्या जबरदस्त शुरुआत है इन दोनों बल्लेबाजों की। एक छोटा सा विराम लेंगे और बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही जुड़ेंगे आपके साथ वापस, तब तक के लिए बने रहिए। केतन आया नए गेंदबाज, पहली बार इन्हें गेंद थमाई गई है इस पारी में। अपना पहला ओवर डाल रहे हैं स्पेल का। सूफियान स्ट्राइक पर, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है पहले 6 ओवरों में। 82 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंदबाजी केतन की। सूफियान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, पहले ही गेंद पर कट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद अंदर आई और आक्रामक रुख है दोनों बल्लेबाजों का, इसलिए पहली गेंद से ही कोशिश करते हैं कि दबाव बनाकर खेलें गेंदबाजों पर। लेकिन यहां पर केतन की बेहतरीन गेंदबाजी से शुरुआत। पहली गेंद डॉट गेंद, बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। कप्तान है, कप्तान मनोज ने यहां पर केतन को गेंद थमाई है, और अभी तक अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदों पर दोनों डॉट। बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से, 3 डॉट गेंद, एक के बाद एक। बेहतरीन शुरुआत केतन की। एक और बेहतरीन गेंद, 4 डॉट गेंदें। जबरदस्त गेंदबाजी केतन के द्वारा, बेहतरीन वापसी, और इस तरह के ही कुछ ओवर्स चाहिए होंगे इन्हें अगर एस ग्लोबल को वापस आना है इस मैच में। बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत हुई है, और सूफियान 4 गेंदें यहां पर खेल चुके हैं। बड़ी बात है कि एक भी रन नहीं बनाया उन्होंने अभी तक। पहली बार देखा हमने इस पारी में सूफियान को ऐसे दबते हुए किसी गेंदबाज के समक्ष।
और एक बार फिर से सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में। बेहतरीन गेंदबाजी केतन के द्वारा। हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन वहाँ पर मौजूद है इसी तरह के शॉट के लिए। और बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी केतन की, यहाँ पर 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं, वो भी सूफियान जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज को। ये उपलब्धि ही है, उससे कुछ कम नहीं है ये। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी। सूफियान वापस स्ट्राइक पर हैं। इस ओवर में एक भी रन नहीं बनाया इन्होंने, 5 गेंदें खेल चुके हैं। और अगर ये गेंद भी खेल लेंगे बिना रन बनाए तो डॉट हो जाएगी और मेडन ओवर हो जाएगा। और वही हुआ, मेडन ओवर से शुरुआत केतन की। और देखिए जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, वही हुआ। केतन ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपना पहला ही ओवर मेडन डाल दिया, वो भी सूफियान जैसे बल्लेबाज को। बहुत तारीफ के काबिल ये कार्य। और ओवर समाप्त हो चुका है। 7 ओवर में 82 रन ही हैं बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर में भी 82 थे, तो मेडन ओवर डाला यहाँ पर केतन ने। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अमित आए हैं अपना पहला ओवर लेकर। पहली गेंद पर 1 रन दिया यहाँ पर अमित ने। अच्छा शॉट खेला निकेश ने। और वापस आए हैं सूफियान स्ट्राइक पर। पिछला ओवर मेडन निकाला था इन्होंने, तो थोड़ा सा दबाव होगा इनके ऊपर। हालांकि जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग नहीं रहा है किसी भी तरह का दबाव होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों में से किसी पर भी। हवा में खेला हुआ शॉट, और यहाँ पर एक क्षेत्ररक्षक है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 ही रन होगा। अमित की अगली गेंद, और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये 6 रन। जबरदस्त शॉट, ऊपर की गेंद डाली। इस गेंद की लंबाई ज्यादा थी, और क्या खेला है यहां पर निकेश ने। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह जी हां, इनके तो आज तेवर ही यहां पर एकदम जबरदस्त हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बड़ा छक्का लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और दर्शकों की तरह वहां पर क्षेत्ररक्षक देखते ही रह गए, कोई मौका ही नहीं दिया यहां पर। और फिर से फ्लाइटेड गेंद, यहां पर बड़ा शॉट। क्या ये चौका होगा? ऐसा लग रहा है हो जाएगा। और ये बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, 2 रन मिलेंगे यहां पर। कवर्स के ऊपर से खेला हुआ बेहतरीन शॉट, 2 रन के लिए। और ये छोटी गेंद इस बार अमित के द्वारा, वो भी लेग स्टंप पर, और आसानी से उसे ग्लांस किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन मिलेंगे। बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन मिलेगा, लेकिन रोक सकते थे। हालांकि चूक हो गई यहाँ पर गेंदबाज से, और एक भी रन नहीं, डॉट 1 रन मिल गया। और ये अमित के पहले ओवर की समाप्ति होने में, जी हाँ, हो गया है पहला ओवर समाप्त। 8 ओवर में 95 रन बिना किसी नुकसान के। और ये भी महंगा ओवर था, 13 रन बने इस ओवर में। केतन वापस आए अपना अगला ओवर लेकर।
केतन आ गए अपना अगला ओवर लेकर, बेहतरीन शुरुआत। और निकेश पटानी ज़बरदस्त फॉर्म में है, 48 पर आ गए हैं देखते देखते सिर्फ 27 गेंदों के बाद। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, और इसी तरह के आक्रामक बल्लेबाज हैं ये, जब भी आते हैं अपना जादू बिखेर देते हैं अपनी बल्लेबाजी से। और आज तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और आक्रामक बल्लेबाजी की है। केतन ने बहुत बेहतरीन गेंद डाली है, 7 गेंदें बिना किसी रन के डाल चुके हैं केतन। ये इनका दूसरा ओवर, अभी तक एक भी रन नहीं दिया है। अब देखना है कि क्या आगे भी डॉट गेंदें डाल पाते हैं। जी हाँ, एक और 8वीं गेंद भी इनकी डॉट। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर, कट करने का प्रयास निकेश का, पूरी तरह चूक गए। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर केतन के द्वारा। केतन की अगली गेंद, और ये बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी यहां पर केतन की। पर बढ़िया शॉट खेला इस बार एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ से आकर अच्छा क्षेत्ररक्षण किया वहां पर क्षेत्ररक्षक ने। केतन ने आखिरकार अपने ओवर में पहला रन दे ही दिया। जी हाँ, 10वीं गेंद पर पहला रन दिया इन्होंने, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। दूसरा ओवर चल रहा है इनका स्पेल का। अगली गेंद लेकर आते हुए, और बड़ा शॉट खेला है सुफियान ने। क्या ये बड़ा छक्का है? जी हाँ, बहुत बड़ा छक्का है ये। जबरदस्त प्रहार डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर की तरफ, 6 रन के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, और ये फ्लाइट यहां पर डालकर लालच देने का प्रयास किया था। और लालच तो होगा ही ऐसे बल्लेबाज को जिस तरह से खेल रहे हैं। और इसी के साथ 100 रन पूरे हुए। 9वां ओवर चल रहा है सिर्फ, कोई मान सकता है 9 ओवर में 100 रन? क्या बल्लेबाजी है, वाह। पूरी प्रतियोगिता के शायद सबसे बेहतरीन शुरुआत सलामी बल्लेबाजों में से एक, ये दोनों बल्लेबाज 49 रन पर आ गए हैं। निकेश सिर्फ 1 रन पीछे हैं अपने अर्धशतक से। और सुफियान को देखिए, 23 गेंदों पर सिर्फ 23 गेंदें खेली हैं सिर्फ, और 39 पर आ गए हैं। तो निकेश 30 पर 49, क्या बल्लेबाजी है। बेहतरीन शॉट कवर्स के ऊपर से खेला, और क्या ये चौका होगा लग रहा है? 4 हो जाएगा। जी हाँ, 4 रन। कोई भी वहां पर क्षेत्र रक्षण नहीं मौजूद था, और जो थे स्वीपर कवर से पहुंच नहीं पाए। बेहतरीन बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपको रिप्ले दिखाएंगे कैसे चौका लगाया और ओवर की समाप्ति हुई। महंगा ओवर ये केतन का। बढ़िया शॉट खेला यहां पर सुफियान ने, ओवर की समाप्ति चौके से की। आप देख सकते हैं रिप्ले, क्या जबरदस्त प्रहार करें दोनों बल्लेबाज यहां पर। और लग नहीं रहा है कि एक भी विकेट यहां पर गिरा पाएंगे जिस हिसाब से बल्लेबाजी हुई है। और अमित आए हैं अपना अगला ओवर लेकर, बेहतरीन गेंदबाजी से शुरुआत की, लेकिन बहुत रन हो गए हैं यहाँ पर। रन रोकने के लिए कोई चाहिए, कोई गेंदबाज तो चाहिए, वरना यहाँ पर तो लग रहा है 225 का स्कोर खड़ा होने जा रहा है। फिर 9 ही ओवर हुए हैं, 10वां ओवर शुरू हुआ है। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, बड़ा शॉट लग रहा है ये निकेश का। 6 रन, और ये उनका अर्धशतक पूरा। क्या बल्लेबाजी है, जबरदस्त अद्भुत बल्लेबाजी, और क्या अर्धशतक है। 55 पर आ गए हैं सिर्फ 32 गेंदों के बाद। जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बड़ा शॉट, 6 रन।
क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, आक्रामक बल्लेबाजी। 55 रन सिर्फ 32 गेंदों पर, ताबड़तोड़ प्रहार, एक से एक बेहतरीन शॉट। और बॉटम हैंड की तो धनी है यार, आज इन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है ये साफ हो जाता है। देखिए फिर से बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन है, वहाँ पर 1 रन मिलेगा। इतना तेज़ प्रहार करते हैं कि एक बार में रोकना भी मुश्किल है क्षेत्र रक्षकों के लिए। हालांकि अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। और ये 10वां ओवर चल रहा है, 113 रन बन चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 20 ओवर तक अगर यही लोग खेलते रहे तो 250-250 का स्कोर बन सकता है। इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। सुफियान स्ट्राइक पर, और ये वाइड गेंद। जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड का, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद जो वाइड करार दी गई। और ये हवा में खिला हुआ शॉट, क्या ये कैच हो जाएंगे यहां पर? बहुत ऊपर गया है गगनचुंबी शॉट, और ये कैच छूटा और 2 रन के लिए वापस हुए आसानी से। देख सकते हैं आप किस तरह से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच होने का यहां पर जो मौका था वो चूका। आसान नहीं होते हैं कैच, इसलिए क्षेत्र रक्षक को भी आप कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पर। अच्छा प्रयास था, हालांकि कैच हो जाता तो बहुत महत्वपूर्ण विकेट की प्राप्ति होती है यहाँ पर। स्काई हॉक्स के बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। एस ग्लोबल 1 विकेट ले सकते थे। अगली गेंद अमित की, और ये बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन ये वाइड है। ओह, एक और अतिरिक्त रन वाइड के खाते में जुड़ा। स्क्वायर लेग पर लिया हुआ 1 रन, और ये यहाँ पर निकेश वापस आए स्ट्राइक पे। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, आप देख चुके हैं आज नज़ारा जो दिखाया है सुफियान और निकेश ने। खास करके निकेश की तारीफ करनी होगी, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। बढ़िया शॉट पंच किया कवर्स की तरफ, और एक भी रन नहीं मिलेगा। मनोज कप्तान है वहां पर डटे हुए, और अच्छा क्षेत्र रक्षण। ओवर की समाप्ति और अंपायरों का निर्देश यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का। 10 ओवर के बाद स्कोर 118 बिना किसी नुकसान के, ताबड़तोड़ शुरुआत। और आपके साथ वापस जुड़ेंगे एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस जुड़ते हैं।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम। 10 ओवर में 118 रन का बेहतरीन स्कोर खड़ा कर लिया है स्काई हॉक्स ने, और अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम अंग्रेजी कमेंट्री प्रस्तुत करें अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को। We're back live and Sandy has been given the ball to bowl his first over. Sandeep starts off well. That's a good shot towards the sweeper cover by Sufyan, and Nikesh back on strike. The name is Sandeep Gadiyar, popularly known as Sandy in his team. And a wonderful pace bowler this guy is, the left arm pacer. On strike is Nikesh. Just a single this time, and probably will come back for the second as well, decide against it. Played it well towards the extra cover. Probably was not ready there, Sufyan. Just a single this time. Sufyan coming down the track, trying to hit the big one, not succeeding. Takes a single. Nikesh back on strike, and this is the 11th over. They're not been able to take a wicket till now. Oh, these batsmen have played wonderful knock, and what a start by them. 121 without loss. This is just the 11th over. Just have a look at the run rate there. That's a good delivery and well played again. Should just be a single. The covers fielder does well. Throws his back to the non-strikers end, where the bowler picks it up nicely. Coming into bowl his next delivery, Sandeep Gadiyar. Oh, and that's a slow one. That is really well bowled and well played as well. Picked it up nicely. Sufyan comes on 49 after that single. Played it well towards the long on for a single. Nikesh back on strike, and 49 of just 29. Sufyan Sheikh. Nikesh 58 of 36. Brilliant performances by both the batsmen. We'll have to see if anyone among them can score a century. That's a good delivery, well played as well. Just a single in the sweeper cover region. Nice batting by both these players. Only 6 of that over. Sandeep bowls a good first over of his spell, and the score after 11 overs is 124 without loss. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Ketan coming into bowl is next over. That's a good start by him. And a good shot played towards the sweeper cover. Should just be a single there. Sufyan back on strike. He's on 49, just needs a single to complete a wonderful half century there. Sufyan Sheikh.
Oh, and this time plays it in the air. And he's gone on 49. Oh, what a catch that is by Aditya. At the deep point region. That's the wicket they were looking for. They've got the first one. Just have a look at that. That was a good catch and deliberately placed the fielder there. And he's gone. Ketan gets his first wicket and gives the breakthrough to the team. Just have a look at the replay there. Wonderful piece of bowling and the first wicket down for the Skyhawks. That was a good shot played in the air, but he didn't realize there was a fielder out there. That was a good catch by Aditya in the deep point region. What a catch that was. And finally they get the breakthrough. The first wicket down. Sufyan Sheikh, after playing a wonderful knock of 49 of just 30 deliveries, goes back to the pavilion. And the score after 11.2 is now 125 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Ketan gets the breakthrough for his team and the captain. We're back live. Zain Syed is the new batsman. Starts out well. Ketan to Zain. Trying to play the big shot. Trying to play the cut shot. I beg your pardon. Not succeeding there, Zain. That's his first delivery, and that's a wonderful piece of bowling by Ketan in his spell till now. He's the one who's actually put on some brakes on the accelerator that the Skyhawks were pressing right from the word go today. Coming to bowl his next delivery, Ketan. That's a good shot played by Zain. Straight to the fielder, no run taken again. Wonderful work there by Ketan again. 2 dots in a row and a wicket as well prior to those 2 dots. So 3 dots in a row. Just a single given in the first 4 deliveries that he's bowled in this over. Absolutely brilliant stuff by Ketan, and he was the bowler who has bowled a maiden over in this very innings. Would you believe it? The score is 11.4 overs, 125 for 1, and there is a maiden over also being bowled. That is Ketan for you. Wonderful player, brilliant bowler. This is just the 12th over and they're cruising to a big score for sure. Oh, another good delivery, and this time the keeper misses that. It seems this will be a boundary, and byes and 4 runs given by the wicket keeper this time. Ketan not happy at all. Just have a look at that. Sloppy bit of work there by the wicket keeper, and that goes to the boundary. That's the end of, still not the end, just 1 delivery remaining in this over. But some runs gifted here. These should be stopped because there's a lot of, a big score is already on the board, already 129, 10.9 per over is almost 11 runs an over. It's not easy for them to chase when they come to bat in the second innings. Coming into bowl, next delivery. Oh, that's a wonderful piece of bowling. And that's the end of a good over by Ketan. The score after 12 overs is 129 for 1. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, view. Sandeep Gadia comes to bowl his next over. Starts off with a wide, the left arm pacer down the leg side. Not a good delivery to start the over.
That's a good delivery and played well as well. Just a single and a quick single taken. He played it well towards the covers region. There was a fielder, but a quick single taken by both these players. Zain back on strike. That's a good delivery, a good comeback by the bowler. A dot. And Zain Syed has played 5 deliveries and hasn't scored a run. So, under slight pressure it seems. Oh, another good delivery. The 6th one he plays. And that to a dot. So, Nikesh at the other end would be definitely thinking to go to his partner. That's what he's doing. Trying to have a chit chat with him and trying to explain him that rotation of strike is also quite important here. Zain has played 6 deliveries without even scoring a run. So, going against the wind here, Zain. Sandeep Gadiyar bowling a good over. Just 2 of this over till now. 3 deliveries he's bowled, 3 left. Oh, another good delivery, and finally Zain takes a single and is off the mark. Probably should have stuck to the off stump. Balls on the mid stump this time, and Zain was ready to just play it towards the mid wicket, mid on region. Just a single. Oh, and that's a wonderful delivery and getting the edge there. That was a quick delivery as well by Sandeep. Let's have a look at that. We'll have to just figure it out whether that was bad or... Oh, and that was bad. And a very quick delivery there. Gets the edge, but no harm to the batsman. And no single taken as well. So the last delivery in this over. Oh, and he plays it really well this time. A big one again. He is hitting it at will. Brilliant shot by Nikesh once again. Just have a look at that bottom hand that he has. What a shot that is. And the mid on, the long on fielder, just a spectator there. What a big shot that is. The bottom hand coming into picture. This guy is special, especially when he hits those shots of the bottom hand. Brilliant shot that was pitched up, and Nikesh giving it the treatment once again. And that's the end of another expensive over. 13 overs have been bowled, 138 for 1. And we'll take a quick break and be back soon. The run rate still almost 11 runs an over at the moment. Stay tuned, we'll be right back. 10.62 is the current run rate. Ketan bowling his last over. On strike is Zain. That's a good start by Ketan. That's a wonderful shot by Zain, and the fielder misses that. But the third man fielder does well. A couple taken by Zain easily. Nikesh trying to come back for the third. Ketan coming into bowl is next delivery. That's a good shot by Zain this time, and could be a boundary. That's a boundary. Scored brilliantly by Zain. Played it straight down the ground, and a grounded shot as well. A lot of bottom hand in that shot. No chance for the fielder at long on to just stop it. Just have a look at that. How quickly it went to the boundary. Wonderful shot played by Zain Syed. This is his first boundary. And he is now coming into the act. 6 runs scored of the first 2 deliveries. Wonderful batting by Zain.
Oh, and this time Ashton. Probably he's missed that catch. Not an easy one for sure. And yes, that was bad. No signal by the umpire. Just have a look at that. That did bounce a lot. Oh, and that did take the edge as well. Clear nick there. And Ketan almost getting another wicket. A single taken in the third man region. That's a short delivery played well towards the long on, just a single. And he's trying to come back for the second. The slight misfield by the fielder, but recovers nicely. Just a single there. That's a good delivery, just a dot this time, straight to the fielder that covers, the captain Manoj. That's a wonderful piece of bowling, and that's the end of his spell. Ketan balls a dot to end the spell, 2 dots in a row. And this over costed him 8 runs. So 146 for 1 after 14 overs. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And this is a 15th over starting. That's a good shot played straight to the fielder, and he does well. Mahesh starts his second over, bowling it on the pads of the batsman, and a quick single taken by Nikesh. Zain back on strike. That's a good shot played by Zain. There's a fielder out there, just a single. Cut well towards the deep point, a single taken, and Nikesh back on strike. Zain 9 of 13 deliveries, slightly on the slower side.
Nikesh Patani, just have a look at him. What an innings he's played today. Absolute brilliance shown by this batsman. One of the best batsmen in the circuit here. 69 of just 43. Wow. And look at the shots that he's hit today. Oh, and this time seems it will be another boundary towards the deep backward square leg. There's no fielder out there. That's a wonderful shot played again, and he's just taking him on. Shuffles a bit and tries to disturb the line of the bowler and succeeds there and gets a boundary again in the deep backward square leg region. Wonderful batting by Nikesh Patani. He's on fire, this guy. And the 150 up in just the 15th over. 152 for 1. Sharp. That's a good shot again. This time playing it towards the deep mid wicket. There's a fielder out there trying to come back for the second. The fielder doesn't allow that. What a wonderful throw by the fielder there. Just a single. Zain back on strike and Mahesh bowling a good line. However, he needs to be slightly on the off stump. But he's bowling within the stumps, which is a good thing. Oh, and trying to take the quick single, but the bowler doing really well, going straight towards the batsman and stops the ball. No run taken, that's a dot. That's a wonderful comeback by Mahesh. Just 7 of the over. This is really good bowling by Mahesh. Coming to bowl the last delivery of his over. It could be a wide here. It is a wide, signaled by the umpire. So another extra added to the tally. As delivery time. That's a good shot played towards the deep point again. Just a single. There's a fielder out there. It's a good throw by the fielder as well. So that's the end of the 15th over. 155 for 1, and we'll take a quick break and be back soon with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. संदीप गडियार आ गए हैं अपना अगला ओवर लेकर. इनका तीसरा ओवर है और स्ट्राइक पर है निकेश पटानी. 74 पर खेल रहे हैं 45 गेंदों के बाद, और ये 16वां ओवर शुरू होता हुआ. बेहतरीन शुरुआत. तेज गेंद, वो भी अंदर आती हुई गेंद. आसान नहीं था बल्लेबाज के लिए. डॉट गेंद से शुरुआत. वंडरफुल, बढ़िया शॉट खेला एक बार, और दूसरे रन के लिए भी वापस आए हैं जैन. जी ने एक ही रन लिया. स्ट्राइक पर थे जैन, शायद दूसरा रन भी पूरा किया है. क्षमा चाहेंगे यहाँ पर. जी हाँ, दूसरे के लिए वापस आ गए तेजी से निकेश पटानी. जैन वापस स्ट्राइक पर. संदीप गडियार अगली गेंद लेकर आते हुए, और ये वाइड गेंद, और विकेट कीपर की यहाँ पर तारीफ करनी होगी. चौका रोक लिया यहाँ पर. अतिरिक्त रनों का चौका हो जाता है यहाँ पर. खराब गेंदबाजी है. लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड. अतिरिक्त रन
मिला यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को। स्काई हॉक्स ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहे हैं 158 पर 1, 15.2 ओवरों में 10 के ऊपर का रन रेट अभी तक बना के रखा हुआ है। जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसिस्टेंसी में सुधार करेंगे अगर तो बहुत अच्छा रहेगा एज ग्लोबल के गेंदबाजों के लिए। आसान नहीं होता है इस तरह की गेंदबाजी करके बल्लेबाजों के आक्रमण और कहर से बच पाना, इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ऑफ स्टंप के बाहर रखकर अगर आप एक एक रन देंगे तो ज़्यादा सही है। देखिए बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे हैं और डॉट भी निकाल रहे हैं अब। तो इसी कंसिस्टेंसी, इसी तरह की गेंदबाजी की हम बात कर रहे थे। और संदीप गडियार का तीसरा ओवर, ये 4 गेंदों पर से 3 रन दिए हैं, तो अच्छी गेंदबाजी। और वाइट के बाद तो क्या वापसी की है, 2 डॉट गेंदें, एक और डॉट गेंद। और ये देखिए खास बात है इनकी, ये गेंद को बहुत ज़्यादा ताकत से पकड़ते हैं। तो जब ये अपने कंधे से गेंद को फेंकते हैं अपने हाथों से और कंधे का प्रयोग करते हैं, गेंद बहुत तेज़ निकलती है और कभी कभी बल्लेबाज चूक जाता है, उनका स्टंप उड़ जाता है जगह से। अभी तक जैन बहुत बार चूक चुके हैं इनकी गेंदों पर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास आ गया कि बेहतरीन शॉट, 4 रन। क्या ज़बरदस्त प्रहार है जैन सैयद का, कोई मौका नहीं यहाँ पर किसी क्षेत्र रक्षक के लिए। देखिए आगे आके क्या ज़बरदस्त शॉट खेला, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रनों के लिए। बहुत ही उच्च स्तरीय बल्लेबाजी है जैन की। हालांकि रन उनके सिर्फ अभी तक 12 ही हुए हैं 20 गेंदों पर, सिर्फ 60 का स्ट्राइक रेट। बहुत अच्छा नहीं है ये, लेकिन बढ़ाना होगा स्ट्राइक रेट। और निकेश पटानी भी शायद उनको बता रहे हैं कि एक एक 2 रन तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पर 16 ओवर के बाद 162 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 10 के ऊपर का रन रेट बना हुआ है। और अब आ रहे हैं महेश अपना अगला ओवर लेकर। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास निकेश का, चूके पूरी तरह से आगे बढ़कर आकर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, छक्का लगाना चाह रहे थे। महेश की अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद रखी और ऊपर की गेंद भी थी, चूक गए यहाँ पर निकेश। और ये वाइड गेंद एक बार फिर से महेश बहुत अतिरिक्त रन दे चुके हैं आज, एक और दी इस बार वाइड। यहाँ पर 1 रन जुड़ा और एक गेंद भी वापस डालनी पड़ेगी। बेहतरीन शॉट, 4 रन के लिए, क्या शॉट है, एक टप्पा और सीमा रेखा के पार निकेश पटानी। जबरदस्त प्रहार, आप देख सकते हैं क्या खेलते हैं, वाह। खराब गेंद, बेहतरीन शॉट। अगर आपको इस तरह की गेंद डालनी है ऑफ स्टंप के इतने बाहर, तो आपको एक डीप कवर ले लेना चाहिए निकेश पटानी की बल्लेबाजी पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है निकेश की, करारा प्रहार। ये देखिए जबरदस्त प्रहार, खराब गेंद और दबाव में खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है महेश। ज़बरदस्त प्रहार, 4 रन के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में निकेश पटानी का। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। सिर्फ 22 रन दूर हैं अपने एक बेहतरीन शतक से, 78 पर आ गए हैं। और इस बार बड़ा शॉट फिर से, क्या ये छक्का है? जी नहीं, 2 रन मिलेंगे यहां पर। अच्छी गेंदबाजी थी, ऐसा लग रहा था बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हो गए, लेकिन डीप कवर्स में 2 रन लिए।
और ये बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन होना चाहिए, 1 ही रन है और बेहतरीन यहाँ पर क्षेत्ररक्षण लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक का। और निकेश जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 170 आ गया है स्कोर अब। बढ़िया शॉट और सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में, एक भी रन नहीं इस बार। और इस बार तेजी से 1 रन लिया, बहुत बेहतरीन ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स निकेश पटानी की तारीफ करनी होगी। अच्छा क्षेत्र रक्षण था लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने एक बार में हाथ में नहीं ली गेंद, इसके कारण 1 रन मिल गया और निकेश वापस स्ट्राइक पर। यही तो चाहते हैं, वो 81 पर आ गए हैं सिर्फ 49 गेंदों के बाद। और ये हवा में खेला हुआ शॉट और ये आउट निकेश पटानी। यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी महेश की और बहुत ही बढ़िया कैच शॉट थर्ड मैन पर लिया क्षेत्ररक्षक ने। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ 17वें ओवर की समाप्ति पर। बढ़िया गेंदबाजी महेश की, तारीफ करनी होगी। फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे, अच्छी गेंदबाजी है, देखिए स्लो मोशन में रिप्ले देखिए। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन भारी किनारा और मोटा किनारा लगा और सीधे शॉट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गया था ये। जी हाँ, बैकवर्ड पॉइंट पर कैच दे बैठे, शॉर्ट थर्ड मैन नहीं था वो। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 17 ओवर के बाद 171 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और निकेश पटानी की बेहतरीन पारी, 81 रन 50 गेंदों पर सिर्फ बनाया उन्होंने। और वापस जा रहे हैं पेविलियन की तरफ और तारीफ करनी होगी इस ताबड़तोड़ और आक्रामक बल्लेबाजी की। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। ये बेहतरीन शॉट जैन सैयद का 4 रन के लिए, बढ़िया शॉट खेला। छोटी गेंद यहां पर धनराज की आए अपना आखिरी ओवर डालने। ये तीसरा ओवर है धनराज का, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या बढ़िया शॉट। फाइनल की दिशा में 4 रन के लिए पुल किया और अच्छा शॉट खेला। और केतव आए नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे, बढ़िया शॉट एक बार फिर से पुल किया। इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन आसानी से ले लेंगे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, कोई भी तकलीफ नहीं 2 रन लेने में। बेहतरीन बल्लेबाजी जैन सैयद की, अब आ रहे हैं आक्रामक रुख अपना रहे हैं। 21 पर आ गए हैं तेज गेंदों के बाद, बढ़िया बल्लेबाजी है। एक रन लिया इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेलकर। धनराज की अगली गेंद,
और क्या बेहतरीन शॉट है, 4 रन के लिए पहली गेंद पर केतव का जबरदस्त प्रहार यहां पर। और इसमें कहीं भी बॉटम हैंड का कोई हाथ नहीं था, सिर्फ दिशा दी और क्या जबरदस्त तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर आकर शफल करके चौका लगाया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। जबरदस्त बल्लेबाजी केतव की, पहली गेंद पर ही सीमा रेखा के पार भेजी गेंद। और कलाइयों का जबरदस्त उपयोग यहां पर, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगली गेंद लेकर आते हुए धनराज, केतव स्ट्राइक पर, बेहतरीन ड्राइव और उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण केतन का। क्या ये चौका होगा? ऐसा लग रहा है ये 4 रन हो जाएंगे, उसके बावजूद 4 हो गए। जबरदस्त प्रहार और यहां पर कोई क्षेत्र रक्षक नहीं रखा है, बहुत ही 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के पार गई। बढ़िया गेंदबाजी और शॉट खेला, यहां पर एक ही रन मिलेगा पॉइंट के क्षेत्र में। अठारह ओवर के बाद 187 रन 2 विकेट के नुकसान पर संदीप गडियार आए अपना अंतिम ओवर लेकर, उनका चौथा ओवर। बेहतरीन गेंदबाजी संदीप के द्वारा। केतन ने फिर से कोशिश की कि ऑफ स्टंप के बाहर आकर कलाइयों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक ही रन मिला इस बार। और ये क्लीन बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी और यही खास बात है इनकी, इतनी तेज गेंद डालते हैं कि पढ़ के और तेज हो जाती है। जैन सैयद पेविलियन की तरफ वापस आते हुए, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर संदीप गडियार की। बढ़िया गेंदबाज हैं, बाएं हत्था गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। 188 पर 3 हो गया स्कोर, तो जहां लग रहा था कि 250 250 बन जाएंगे, अब लग रहा है कि 200 के आसपास कहीं जाके ये स्कोर शायद रुके। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। बढ़िया गेंदबाजी संदीप गडियार की। बेहतरीन गेंदबाजी, एक और डॉट गेंद।
ओमकार आए नए बल्लेबाज और एक और डॉट गेंद, 2 गेंदें निकाल दी उन्होंने 19वें ओवर में डॉट। और इस समय बड़ा शॉट खेलने की बजाय अगर आप स्ट्राइक देंगे केतव को तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपसे थोड़ा तो पहले आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर ये डॉट गेंदें बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। इस बार बड़ा शॉट और ये 4 रन। तो ये जो कोशिश कर रहे थे आखिरकार इन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली, वो चौका लगाकर। लॉन्ग ऑफ से दूर खेला 4 रन के लिए, बेहतरीन प्रहार। और ओमकार ने खाता खोला चौके के साथ 18.5 ओवर में 192 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, क्या यहां पर कैच हो जाएंगे ये? जी नहीं, बच गए हैं, वहां पर कोई क्षेत्ररक्षक भी नहीं है और दूसरे रन के लिए वापस आ गए। और ये ओवर की समाप्ति हुई 19 ओवर के बाद 194 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ओवर ये संदीप गडियार का, और अच्छा स्पेल कराया उन्होंने। खास करके आखिरी ओवर तो बहुत ही बढ़िया था, सिर्फ 7 रन गए इस ओवर में, उसमें से भी एक लेग बाय था, तो 6 रन ही जुड़ेंगे उनके खाते में। हालांकि स्कोर हो गया 194 पर 3। आखिरी 6 गेंदें बची हैं। धनराज आए अपना आखिरी ओवर लेकर। स्ट्राइक पर ओमकार, 6 पर आ गए हैं ओमकार 4 गेंदों के बाद। केतव खेल रहे हैं 9 पर 4 गेंदों के बाद। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की, और स्काई हॉक्स के पूरे दल की बल्लेबाजी आज ऊपर से लेके मध्यम क्रम तक सारे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ज़बरदस्त रही है। धनराज की पहली गेंद, ये आखिरी ओवर है, आखिरी 6 गेंदें, बढ़िया गेंदबाजी। और 1 रन भी ले लिया यहाँ पर केतव ने, तारीफ करनी होगी। जी हाँ, स्ट्राइक पर थे केतव और ओमकार स्ट्राइक पर आ गए। 1 रन लिया बाय का, तेजी से भागकर ओमकार ने स्ट्राइक चेंज की, केतव को छका दिया था यहां पर स्लोअर गेंद डालकर। लेकिन ओमकार की तारीफ करनी होगी, वापस स्ट्राइक ली और देखते हैं क्या कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी आखिरी 5 गेंदों में। बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इनकी। और ये दूसरे रन के लिए भी वापस आ रहे हैं, जबरदस्त यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और ये आउट हो गए हैं। लेकिन जी हाँ, कोशिश पूरी की यहां पर दूसरे रन को पूरा करने के लिए, लेकिन जितनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी उतना ही बढ़िया थ्रो था संदीप गडियार का। थ्रो देखिए कितना बेहतरीन, लॉन्ग ऑफ से थ्रो किया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, एक टप्पा खाकर। विकेट कीपर ने वहां पर कोई भी गलती नहीं की, सीधे आउट किया वहां पर ओमकार को। और चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर स्काईहॉक्स का 196 के स्कोर पर 19.2 ओवरों में। तो 4 गेंदें बची हैं सिर्फ पहली पारी में, और अब लग रहा है कि कोशिश यहां पर पूरी तरह से जारी है एज ग्लोबल की कि 200 का आंकड़ा छूने ना दें। नए बल्लेबाज आ गए हैं स्ट्राइक पर, अब देखना है कि आखिरी 4 गेंदों पर क्या कुछ बड़ा शॉट लगता है। और ये छोटी गेंद धनराज की, और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, 1 ही रन होगा। दूसरे के लिए आना भी चाह रहे थे लेकिन मना किया यहां पर, और खाता खोला पहली गेंद पर ही अपना दाएं हत्था बल्लेबाज हितेंद्र ने। ये तब आ गए वापस स्ट्राइक पर। अब देखना है कि क्या 3 गेंदों पर बड़ा शॉट खेल पाएंगे केतव। 9 पर खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी 5 गेंदों के बाद। बेहतरीन शॉट यहां पर, और आसानी से 2 रन मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है। बढ़िया थ्रो, गलत एंड पर थ्रो किया। अगर दूसरे छोर पर थ्रो करते जहां पर
विकेट कीपर थे तो शायद यहाँ पर रनआउट का एक मौका बनता, लेकिन 2 रन मिल गए हैं। 199 पर आ गया स्कोर 19.4 में। और ये हवा में खिला हुआ शॉट, और इस बार फिर से 2 रन मिलेंगे आसानी से, ऐसा लग रहा है नहीं एक ही मिलेगा। और ये 200 रन पूरे हुए स्काई हॉक्स के। और तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर गेंदबाजों की एस ग्लोबल के। ऐसा लग रहा था कि 225 तो कम से कम स्कोर बनेगा, लेकिन 200 पर रोक सा दिया है। और एक गेंद बची है बस अब इस पहली पारी में। और अगर ये बड़ा शॉट लगाकर ओवर समाप्त करेंगे और पारी समाप्त करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये। हितेंद्र आखिरी गेंद खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी है, बढ़िया गेंदबाजी, और एक ही रन होगा। दूसरे के लिए आना चाहेंगे, केतव आ भी गए हैं और आसानी से 2 रन हो गए हैं। और हितेंद्र यहां पर नहीं पहुंच नहीं पाए और रन आउट। बढ़िया थ्रो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से। केतव ने तो आसानी से दूसरा रन पूरा कर लिया था, लेकिन हितेंद्र चूक गए थे। और 201 पर पारी समाप्त होती हुई, 201 पर 5 विकेट 20 ओवरों में। और यहां पर एस ग्लोबल खासे खुश होंगे। एक समय लग रहा था कि 225 से 250 का स्कोर बन सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 20 रन पहले उन्होंने स्काई हॉक्स को रोका है। लेकिन स्काई हॉक्स ने भी ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 200 का स्कोर खड़ा किया है, 201 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और करीबन 10 मिनट बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे दूसरी पारी में। एस ग्लोबल को 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है 20 ओवरों में। अब देखते हैं किस तरह से वो अपनी पारी को आगे ले जाते हैं। 10 मिनट बाद फिर आपसे जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
We are back live with the second innings in the TSL, the Super League match between the Ace Global and the Skyhawks, and we welcome all the viewers once again for the second innings. A wonderful start by Skyhawks in this match. They were asked to bat first after Ace Global won the toss, and they scored 201 for 5 in the 20 overs, but Ace Global now will have to chase 202 to win this match, and they've got a very strong batting lineup, let me tell you. Starting from Jitesh Purabia and Ketan, the opening pair for the Ace Global, and Skyhawks bowler Ketav will start the proceedings from the far end. This is the first delivery about to get bowled, and here comes Ketav to Jitesh, and a full toss, and is that a no ball? We'll have to just look at the umpire signal, probably over the waist. No, that was not a no ball, so that's not an ideal start for the bowler, but that was a dot delivery to start, so that's a good start by all means. Coming to bowler's next delivery. On strike is Jitesh Purabia. That's a wonderful piece of bowling, and what a shot that is. That's the first boundary in the match. In the second innings, I beg your pardon there. And Jitesh Purabia off the mark on just the second delivery. That is clipped really nicely towards the deep mid wicket of his pads. And that was such a nice shot to watch. Ketav pitching it up, and Jitesh Purabia hitting it wonderfully well towards the deep mid wicket for a boundary. No chance for the fielder at long on, was just a spectator. And that's a good start by Jitesh to this chase. Coming into bowler's next delivery, Ketav. Oh, and that's a good delivery by Ketav. Jitesh coming down the track and trying to hit the big one. Not succeeding at all. A dot delivery. And Ketav Shah is a wonderful bowler, a very experienced campaigner, and so is Jitesh Purabia. He's a flamboyant batsman, a genuine stroke player. Coming to bowler's next delivery. Oh, and that's a good delivery, played really well towards the deep square leg this time. Could be an easy couple there for Jitesh. Starts off brilliantly, the right-handed batsman. It's a wonderful act, Jitesh Purabia. Brilliant to watch. Ketav coming to bowler's next delivery. Jitesh on strike. That's a full toss and dispatched. Will be a big six. What a shot that is. A poor delivery, and Jitesh Purabia too good for that. He's hit that in the deep mid wicket for a huge six. Wow, what a shot that is. Just have a look at that. Hammered there. That did hit the roof. Absolutely stunning bit of batting there by Jitesh Purabia. Comes down the track and hits a wonderful shot. 12 already in the first over. What a start by Ace Global. Jitesh 12 of 5 deliveries. This guy is a serious batsman. If he stays for long, Skyhawks could be in big trouble. That's a good comeback by Ketav. A dot delivery to end the over. So 12 without loss after the end of the first over, and Ketav bowls a first over, which was a good one, but apart from that six that was hit on a full toss, Jitesh starting off really well.
We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Ahad has been given the new ball along with Ketav. Oh, in the air, Ketan hits a good shot but straight to the fielder. One bounce and into the hands of the fielder, so no harm there for Ketan. That was his first delivery. Ahad bowled a good one, getting some bounce as well from the pitch. Ketan trying to pull that, but straight to the fielder at mid-on. No run scored. Oh, and that's in the air. Could be the first wicket. No, there's no fielder out there. And a couple of runs. Just a single. Jitesh saying no to that. Second run, probably the right call as well. That was placed deliberately in the air towards the covers. Ketan off the mark with that aerial shot. Ahad bowling a really good first over. Has got a lot of nip in his bowling. Extracts the bounce from the deck. Oh, and that's a good delivery, played well by Jitesh, straight to the fielder at point. No run taken. Slight fumble by the fielder at point, but doesn't allow the single to happen. So that is good bowling by Ahad. 3 deliveries and just 1 run in this over till now. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. And was that an edge? It seems this was an edge which was dropped by the wicket keeper. No signal by the umpire, so that was definitely an edge. That's a big miss by the wicket keeper here. Could have been the first wicket, and that too of Jitesh Puravia. What a bowling performance by Ahad in his first over, almost getting the wicket of Jitesh. Coming to bowl his next delivery. Ketan on strike. Oh, and another wonderful bowling, and was that edge again? It seems this was an edge as well. Oh, seemed very close to the edge. Not sure whether this was a catch or not, but a consecutive drop by the wicket keeper behind the stumps. Not at all good wicket keeping this by the keeper. 2 edges dropped in. Don't know whether this was the edge or not, but 2 wonderful deliveries dropped by the wicket keeper. The previous one was definitely an edge. Aha, this is next delivery, and this time in the air, and a quick single taken. Oh, and he was almost short of his crease if that would have hit. So that's the end of a very good over by Ahad. Just 3 of that over. Just have a look at that edge which was dropped by the keeper when Jitesh was batting. And we'll show you the replay very quickly.
This was a delivery on which the edge was dropped by the keeper. Just have a look at that. Jitesh Purabia. Oh, and that was an attempted pull shot, but the wicketkeeper drops that. He was not anticipating that edge as he was trying to pull that, Jitesh. Ketan coming into bowl. His next over on strike is Ketan. That's a short delivery, played really well towards the long on. What a catch that is by the fielder at long on. Absolutely stunning bit of work there. Just have a look at that. Oh, what a catch. What a catch. Probably the best catch in the tournament. Without the shadow of a doubt. That was played in the air. Just have a look at that in the slow-mo. Oh, and what a catch by the fielder at long on. Couldn't have been a better effort if there was one. Absolutely stunning bit of fielding there by the fielder at long on. And that was Ahad, the pace bowler, who takes a wonderful catch, and the first wicket is down on the score of 15. 15 for 1, 2.1, and what a catch once again. We'll show you the replay once again. Just have a look at that. Just have a look at that. Stunning work there by Ahad. Probably the best catch of the tournament without a shadow of a doubt. And these youngsters, wow, how good they play. That was a really high quality catch, probably a catch of an international level for sure. Absolutely stunning bit of work there by Ahad. And Ketan goes back to the pavilion. A score of just 2, 15 for 1. Ace Global already in the third over. That's a great start for Skyhawks. Ketan striking. As always, he's a strike bowler for this team. You all know that he's vastly experienced, and a lot of work needs to be done by these two now. Jitesh Purabia in particular, he's been let off once and he needs to capitalize on that. Steve is the new batsman. He'll face his first delivery. Oh, and that's a good delivery, and Steve plays it well, but straight to the point fielder. No run taken. Another good delivery this time. Oh, and that's a good delivery, and trying to take the quick single to get off the mark. Not succeeding at all. Nikesh Patani really quick. Do not let that single happen. Steve starting off conservatively. 3 deliveries he's faced and still not off the mark. They can't afford that. It's 10 runs per over that they had to score when the innings had started. They're already behind that. Just have a look at the current run rate, only 5.63 per over. That's a good delivery and another dot. Jitesh Purabia saying no to that single. That was the right decision as well. This time in the air, could be a big one. Oh, and that's just a couple. There was no fielder out there. Played towards the long off, and that's the end of a very good over by Ketan. Just 2 runs off that last delivery and a wicket as well in that over. So 3 overs have been bowled, only 17 for 1 at the moment. A lot of work needs to be done by Ace Global. They need 202 to win this match. Just 17 overs remaining in
185 is what they need in the 17 overs. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Ahad to Jitesh Purabia. Oh, and trying to take a quick single, succeeds there. He was appealing for the LBW, but that was missing leg for short. Leg by signal by the umpire. Jitesh gives the strike back to Steve. Ahad is bowling a wonderful line and length in a spell. And what a catch did he take in the last over. A brilliant catch taken by Ahad. Probably the catch of the tournament without a shadow of a doubt. Coming into bowl his next delivery. Ahad on strike is Steve. Oh, and he almost got in there. The inside edge, and a good stop by the wicket keeper. Was trying to cut that towards the point region, not succeeding, and a wonderful piece of bowling by Ahad again. Oh, and that's a very good played shot. That will be boundary, it seems. What a wonderful stop that is by the fielder. Superlative effort there by the third man fielder. Just have a look at that. That was played deliberately. There was no slip, and he played that with full control. That was a good shot by Steve. Jitesh back on strike. Ahad and Keitav bowling really good overs here. The first spell by both the bowlers has been impeccable. Coming to bowl his next delivery. Oh, in the air this time. Will that be caught? He was trying to play it towards the onside. Oh, and he's dropped it. He has dropped it, and probably he's hurt his finger as well. Oh, and that could be really painful. Just have a look at that. Oh, and we just saw such kind of effort in the international cricket as well. Chamika Karunaratne was trying to take the catch, and he lost his 4 teeth while taking that catch, and this could be painful as well this time. The fielder at point, Samir, probably taking it on his finger. Let me show you the replay once again. That was a shot that he wanted to play towards the onside. Got the edge and was really lucky. You're back live. Ahad, and this will be a wide, so drifting down the leg side and paying the price. Just another run added to the tally. Just have a look at that. And this was the one which he wanted to play it towards the onside, but it went high in the air, and oh, and he got it on his fingers. Samir there in the point region, and he's cleaned him up. Ahad cleans Jitesh Purabia. What a bowler this guy is. What a player. And Jitesh Purabia cleaned up. A brilliant delivery by Ahad. Just have a look at that. Was trying to hit the big one, missing that completely. Oh, and this is really good bowling. Playing the wrong line. Should have played with a straight bat. Was trying to hit it towards the long on, but should have tried to hit it towards the extra cover region. Ahad gets a brilliant wicket there with some stunning piece of bowling there. And the second wicket down. Both the openers back into the pavilion in just the 4th over. That's a wonderful start for Skyhawks, and Ahad is on fire. He's the one who's been
in the limelight throughout this innings. What a catch did he take on Kethav's bowling, and now a clean bowl by himself. Cleaning up Jitesh Purabia, one of the best batsmen in the circuit, and 22 for 2 after 3.5. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. What a wonderful start by Skyhawk bowlers. We've got a new batsman on strike. Amit will be playing his first delivery. Ahad coming into bowl his last delivery of his second over, the fourth of the innings. Oh, and what a delivery! Wow! That's a peach of a delivery to end the over. Just have a look at that. Brilliant bowling this by Ahad. He's on fire, this guy. The pacer from Skyhawks. Brilliant stuff by Ahad. That's a really good front on action. Just have a look at that. The jump is brilliant, and look at the follow through. Absolutely wonderful piece of bowling by Ahad there. And that's the end of the fourth over. 22 for 2. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And we've got Nikesh Patani coming into bowl his first over, starting his spell. On strike is Steve. Oh, and that's a wonderful shot. Should be a boundary, will be a boundary. What a shot that is. Brilliant stuff there by Nikesh. I beg your pardon, Steve. Nikesh bowling a short delivery there. Wonderfully played by Steve. Stunning bit of work there. No chance for the fielder at sweeper cover. That was a short delivery and punished by the batsman. — 26 for 2 after 4.1. That's a quick single taken by Steve and Amit. It well towards the point region, and a single taken. Oh, and this time in the air. Just a dot delivery this time.
It's a wonderful shot. This time should be a boundary. But there's a fielder out there and trying to come back for the second. A good throw by the fielder. Chance of a run out, but he completes the second, Amit. And he's off the mark with a good shot, but slightly flirting there with danger. He's coming back for the second, but not easy. That was a good throw from the deep, but gave him a lot of time to complete the second, as it was not straight into the hands of the keeper. This time playing it in the air. There's a fielder out there and he's gone. The third wicket down. Nikesh gets his first wicket in his very first over. And Amit not staying for long at the crease. Just have a look at that. Trying to hit the big one. But this is really good captaincy by the captain of Skyhawks. He's deliberately placed a fielder out there for the short ball. This time the fielder does really well. Wonderful catching this by Ahad, who has been brilliant in that position, and that's the end of another wicket there. 29 for 3 in 4.5 overs, and Nikesh gets his first wicket, and AS Global are in trouble now. They are definitely in trouble, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Nikesh Patani bowling his last delivery of his first over. That's a good one. And that's the end of the fifth over. The score is 29 for 3. Rohan is the new batsman, plays the first ball defensively. We'll take a quick break and be back soon, and we'll be back with the Hindi commentary. Stay tuned, viewers. AS Global chasing 202 are 29 for 3 after 5, in deep trouble at the moment. फरहान शेख आए हैं गेंदबाजी डालने, और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हिंदी कमेंट्री के साथ इस बेहतरीन मुकाबले में। द सुपर लीग TSL मुकाबला हो रहा है एस ग्लोबल और स्काई हॉक्स के बीच फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर, और स्काई हॉक्स की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर 3 बेहतरीन विकेट ले चुके हैं पहले 5 ओवरों में, और क्या ज़बरदस्त आक्रामक गेंदबाजी की तरफ फहाद और निकेश की। फरहान की अच्छी शुरुआत, 1 ही रन, स्वीपर पर 1 रन मिलेगा। स्टीव एक छोर पर डटे हुए हैं, 8 पर आ गए हैं 9 गेंदों के बाद। रोहन
अभी तक खाता नहीं खोला है, उन्होंने एक ही गेंद खेली है। देखना है कि क्या वो इस गेंद पर अपना खाता खोलेंगे या कुछ और गेंदें लेंगे संभलने के लिए और अपने आप को स्थिति के अनुकूल लाने के लिए। फरहान की अगली गेंद, हालांकि यहाँ पर रनअप खो बैठे, अपना वापस जा रहे हैं रनअप पर वापस। बेहतरीन शॉट, क्या शॉट है, एक बाउंस, एक टप्पा और 4 रन। और शायद ये सबसे फ्लैट छक्का हो जाता अगर थोड़ा सा भी और आगे गिरा होता। क्या शॉट लगाया ये और क्या अंदाज है। ना खाता खोलने का रोहन का, ये देखिए बेहतरीन शॉट, और शायद एक कदम और आगे गिरी होती है गेंद तो 6 रन हो जाता। बहुत पास सीमा रेखा के, और जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रोहन की, आते ही दूसरी गेंद पर लगाया चौका और छोटी गेंद को उचित व्यवहार के साथ सीमा रेखा के पार भेजा। फरहान की अगली गेंद, और ये वाइड होना चाहिए। जी हाँ, ये वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में। बढ़िया शॉट, कट शॉट खेला और 1 रन मिलेगा आसानी से। क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पर स्वीपर कवर के क्षेत्र में। बढ़िया कट शॉट, इस बार पॉइंट और शॉर्ट मैन के बीच से खेला 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी है। और फरहान की एक और छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और उसको उचित व्यवहार के साथ चौके की तरफ भेजा सीमा रेखा के पार। बढ़िया बल्लेबाजी है। और ये अच्छी वापसी फरहान की, डॉट गेंद। और ये तेजी से 1 रन लेकर ओवर की समाप्ति। 6 ओवर में 41 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
निकेश आए हैं अपने अगले ओवर को लेकर। बढ़िया शॉट लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में, और एक ही रन मिलेगा इस बार। और यहां पर दूसरे रन के लिए आ गए। अच्छा बैकअप नहीं था और एक रन अतिरिक्त दे दिया यहां पर। शुरुआत ही 2 रन से। और ये वाइड गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी निकेश की। एक और बढ़िया गेंद, रिकॉर्ड डॉट। बेहतरीन शॉट यहां पर, और ये 4 रन। क्या जबरदस्त प्रहार है स्टीव के द्वारा। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। ये देखिए ऊपर की गेंद यहां पर आगे बढ़कर जबरदस्त ड्राइव, कवर्स के क्षेत्र में 4 रन के लिए। तारीफ करनी होगी यहां पर स्टीव की। एक छोर से डटे हुए हैं, 20 पर आ गए सिर्फ 17 गेंदों के बाद, और अभी भी एस ग्लोबल की उम्मीदों को बनाए रखा हुआ है। हालांकि काफी मैच बचा हुआ है अभी, लगभग 13.2 ओवर। और क्रिकेट के खेल में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक बड़ी पारी तो चाहिए होगी एस ग्लोबल को अगर उन्हें मैच जीतना है। खराब गेंद, वाइड गेंद होगी ये। जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड का, और निकेश पटानी यहां पर पूरी तरह से चूक गए। बहुत बाहर डाल दी इन्होंने गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी। और क्या बल्लेबाजी किया आज निकेश ने, तारीफ करनी होगी इनकी। ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी, जेन्युइन ऑलराउंडर जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। ऐसा खिलाड़ी अगर आपके दल में हो तो आपके दल का मनोबल भी और आपके दल का जो संतुलन होता है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, और आपके दल की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। निकेश इस तरह के खिलाड़ी हैं। बल्लेबाज तो हैं ही ताबड़तोड़, गेंदबाजी भी ज़बरदस्त करते हैं। आज एक विकेट भी ले लिया है, और उसके साथ क्षेत्ररक्षक भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा शायद रनअप में उनको परेशानी हुई, तो वहाँ पर उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। हम छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। एस ग्लोबल 49 रन पर 3 विकेट 6.4 ओवरों में।
और एक और चौका यहां पर, खराब गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, 4 रन के लिए खेल दिया उसे, देखिए जी हाँ, और आसानी से खेला उसे 4 रन के लिए। तारीफ करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज की। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे रिप्ले। फाइन लेग के क्षेत्र में बढ़िया स्कूप शॉट खेला 4 रन के लिए, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए। 53 पर 3 है स्कोर 6.5 ओवरों में। और ये 7वें ओवर की आखिरी गेंद निकेश पटानी का, ये महंगा ओवर अभी तक। बारह रन इस ओवर में आ चुके हैं। स्टीव की बेहतरीन बल्लेबाजी, 24 पर खेल रहे हैं 18 गेंदों के बाद। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, और तेजी से 1 रन लिया यहां पर। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद स्कोर 54 पर 3। अच्छी बल्लेबाजी स्टीव की। बढ़िया शुरुआत इस ओवर की, 1 रन लिया। स्वीपर कवर की तरफ खेल के जैन सैयद आए हैं पहला ओवर लेके। बाएं हथा गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं, और अच्छी शुरुआत की उन्होंने भी। अगली गेंद, छोटी गेंद, और यहां पर चूक गए। कट करना चाह रहे थे लेकिन रोहन शॉट खेल नहीं पाए। अच्छी गेंद नहीं थी। जैन यहां पर भाग्यशाली है कि कुछ रन नहीं बने उस गेंद पर, डॉट गेंद हो गई। अगली गेंद लेकर आते हुए बढ़िया गेंदबाजी और बेहतरीन कट शॉट, लेकिन उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, और 1 रन तेजी से भाग के लिया स्टीव वापस स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी, बच गए यहां पर स्टीव। बेहतरीन लाइन और लंबाई भी जबरदस्त थी उस गेंद की, लेकिन दिशा सबसे महत्वपूर्ण इस गेंद पर। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ही बाहर कट करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। और ये बेहतरीन पहला ओवर जैन का, 8वां ओवर है
और एक और बढ़िया गेंद, लेकिन यहां पर विकेट कीपर से चूक हुई और 4 रन के लिए गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के पार। आप देख सकते हैं किस तरह से विकेट कीपर से यहां चूक हुई। जी हाँ, देखिए कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं और 4 रन। जबरदस्त गेंद थी ये, लेकिन विकेट कीपर से भी चूक हो गई। 60 पर 3 स्कोर 7.4 ओवरों में। एक रन लिया तेजी से भागकर और यहां पर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक का बढ़िया प्रदर्शन और ये ओवर की समाप्ति। आठ ओवर के बाद 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर स्टीव और ये बेहतरीन शुरुआत यहां पर फरहान शेख का दूसरा ओवर और ये तेजी से 1 रन लिया। यहां पर रोहन ने तारीफ करनी होगी और ये बच गए यहां पर। आउट हो जाते अगर लग जाती तो। जी हां, अच्छा खासा यहां पर विकेट मिल जाता। ये देखिए बहुत दूर थे क्रीज से। विकेट कीपर की सूझबूझ की यहां पर तारीफ करनी होगी और ये बचे, लेकिन रोहन ने स्ट्राइक वापस ली। बेहतरीन शॉट, क्या ड्राइव है और क्या ये चौका होगा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 4 रन होना चाहिए। जी हां, जबरदस्त यहां पर ड्राइव खेली है रोहन ने। बहुत बेहतरीन शॉट, बल्ले को वी में खेला और क्या बेहतरीन शॉट था ये। 4 रन के लिए ये गेंद सीमा रेखा के पार गए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। ये देखिए सीधे बल्ले से, इससे बढ़िया शॉट तो क्या ही देखने को मिलेगा। जबरदस्त क्रिकेटिंग शॉट ये। रोहन की तारीफ करनी होगी यहां पर, बेहतरीन बल्लेबाजी। 10 पर आ गए 6 गेंदों के बाद। अच्छा खेल रहे हैं रोहन भी। स्टीव 27-24 गेंदों के बाद फरहान शेख की अगली गेंद। बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा शॉट खेलकर 1 रन लिया आसानी से। कवर्स पर तपन कप्तान इस दल के, बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन आज कुछ खास करने का मौका नहीं मिला है। कप्तानी ज़बरदस्त कर रहे हैं। 3 विकेट चटका दिए हैं उनके गेंदबाजों ने। पहले 5 ओवर में ही 3 विकेट चटका दिए थे। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हो रही है स्टीव और रोहन के बीच। फरहान का ये दूसरा ओवर, 9वां ओवर इस पारी का। बेहतरीन गेंदबाजी और 1 ही रन इस बार। जी हाँ, कवर्स पर आसानी से 1 रन लिया, लेकिन 1 रन से ज़्यादा कुछ होना नहीं है। आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड रन रेट RRR 11.82 का, लगभग 12 रन प्रति ओवर। बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे, वरना बाद में इतना प्रेशर आ जाएगा कि रिक्वायर्ड रन रेट 15 के आसपास भी पहुंच सकता है।
रोहन और स्टीव दोनों ही सक्षम है इस तरह की बल्लेबाजी करने में। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, और एलबीडब्ल्यू की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन एक ही रन होगा। और क्या ये लेग बाय है, देखना है अंपायर का निर्णय क्या है। जी नहीं, बल्ला लगा था, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद गई, एक रन मिला। अगली गेंद लेकर आते हुए फरहान शेख, इस ओवर की आखिरी गेंद। बेहतरीन ड्राइव, एक ही रन मिलेगा, और यहाँ पर एक भी नहीं मिलता अगर थोड़ा सा लचर क्षेत्र रक्षण नहीं होता। हालांकि हाथ से गेंद निकली और एक रन। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 9 ओवर के बाद स्कोर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन रेट है 7.78 का, 8 से भी कम, और 12 का रिक्वायर्ड रन रेट आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जैन आए अपना अगला ओवर लेकर, छोटी गेंद, बेहतरीन शॉट, और तेजी से एक रन लिया, नहीं लिया रन, वापस भेजा यहां पर रोहन ने स्टीव को। और ये बढ़िया शॉट, पॉइंट के क्षेत्र में, अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन खराब थ्रो, और दूसरे रन के लिए वापस आएंगे यहां पर। जैन की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, और ये अच्छा क्षेत्र रक्षण भी, एक रन ही होगा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलकर। बढ़िया शॉट था रोहन का, और बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम तो हैं रोहन, लेकिन शायद सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो समय कब आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, 6 रन, जी नहीं 4 है, एक टप्पा और 4 रन। ऐसा लगा था कि शायद सीमा रेखा आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन स्टीव का बेहतरीन शॉट, और लॉन्ग ऑफ से दूर खेला, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में 4 रनों के लिए क्या ज़बरदस्त गैप निकाला है स्टीव ने। और ये एक बढ़िया शॉट 4 रन के लिए। 8 रन बन चुके हैं इस ओवर में, 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बची हैं। अभी भी 12 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी कि हर गेंद पर 2 रन तो चाहिए ही इस मैच को जीतने के लिए। अभी से हर गेंद पर 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभानी इन बल्लेबाजों को। बेहतरीन ड्राइव,
उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, एक भी रन नहीं। कप्तान तपन का चीते की तरह तैनात खड़े हुए हैं वहां पर, इनको जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि बीच में एक बार चूक हो गई थी, लेकिन जबरदस्त क्षेत्ररक्षण रहा है। अच्छी गेंद और आसानी से खेला उसे, और चूक हो गई यहाँ पर क्षेत्ररक्षक से, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्ररक्षक ने उसे रोक लिया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 10 ओवर पूरे हो चुके हैं और 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.9 लगभग 8 रन प्रति ओवर का रन रेट, और 12 से भी ऊपर का रन रेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए अगले 10 ओवरों में। अंपायरों का निर्देश ड्रिंक्स ब्रेक का, और छोटे से विराम के बाद वापस जुड़ेंगे। आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हम वापस आ गए हैं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, और हमें इजाज़त दीजिए कि हम अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ एक बार फिर से रुख करें। Parag Doshi has been handed over the ball for his first over, and that's a good start by the offie there, bowling it outside the off stump, trying to hit the big one there. Steve missing that completely. Should have tried to play towards the offside, but trying to hit it towards the onside. Probably that is why he missed the trick there. Oh, and that's a wonderful piece of bowling by Parag. This is the 11th over. He started off really well. Steve 35 of 33 deliveries.
Rohan 15 of 10 deliveries. And they need some really big overs now. Can't go with the same run rate for another few overs. The pressure will be mounting heavily on the batsman then. That's a good delivery and played well as well. Could be a couple here. They run the first one quickly, but only a single. That's a good work there by the fielder in the deep. Just a single. Just a single again. So this is really good bowling by Parag Doshi. Just 2 runs of the first 4 deliveries in his first over. What a start by the off spinner there. Oh, and trying to hit the big one again, but will just be a single, trying to come back for the second. Rohan says no, and that was the right call, it seems. That was a good throw from the deep. But singles won't help them. They need some big shots, and only 3 runs in this over will definitely not help the cause. 202 is what the ask is. And they are at 82 for 3 in the 11th over, so not many overs remaining after this one. Comes down the track, plays in the air. Come back for the second. There's a misfield there, and oh, and this time chance of a fumble, and this time he's gone. This is really poor calling by Steve, and for no reason he's lost his wicket. And that's what the pressure of the run rate does. This was just not required. Why did he go for the second? I'll show you the replay. But this is a big wicket down, and East Global losing their 4th. That was a really good piece of work there by the fielder in the deep. So 83 for 4 after 11. Not at all good calling by Steve. I'll show you the replay, how he got out. Just have a look at that. That was the last delivery of the previous over. 11 overs bowled, 83 for 4. Rohan on strike, and Zain coming into bowlers next. Just have a look at how Steve got out. Unnecessary run out there. Came down the track, tried to play the aerial shot. Called for the second, and Rohan said no. That was the end of Steve. And we are back live. That's a good delivery by Zain. That was the end of Steve. He played a good hand, but there was no need for that second run. Don't know why both of them were not clear about that. Zain coming into bowl his 3rd over. New batsman Dhanraj is at the non-striker's end. Played well towards the short third man, a quick single taken. That's a good delivery, another dot. This is good bowling by Zain.
That's a wonderful delivery again, and this time a quick single taken. That's a very good over by Zen. That's a good third over in his spell by Zan. It's the end of the 12th over, 86 for 4, and AS Global struggling at 86 for 4. The run rate could be 7.17, but the required run rate has now risen up to 14.5. Dhanraj and Rohan will have to do something really special if they want their team to cross the line today. Looks highly unlikely though the way Skyhawks are bowling. That's a good start by Parag Doshi once again. In the air, coming down the track, could be a big one. That's a boundary, it seems. Single by the umpire. Let's have a look at that replay. Oh yes, that's a boundary for sure. Parag Doshi bowling well, but this time Rohan got the better of him. Came down the track nicely, and what a shot that was. Oh, and this time appealing for an LBW, but the umpire not interested. Leg by single by the umpire, probably drifting down the leg side. Just have a look at that. That was a quick one. Oh, and definitely missing the leg stump. No chance about that LB. That's a good sweep shot this time. Could be another boundary. Is a boundary. That's a wonderful bit of batting by Rohan once again. And this was Dhanraj, I beg your pardon. Good shot by Dhanraj. Just sweeping it nicely from outside the off stump too. The deep square leg boundary for a 4. Wonderful shot by Dhanraj. He opens the account of his boundaries. This is his first boundary. Oh, and that's a wonderful comeback by Parag Doshi. A quicker one this time. Dhanraj trying to hit the big one, not succeeding at all. It's a good comeback by the off spinner. He's bowled really well in his spell till now. This is his second over. That's a good shot towards the long off, just a single. That's the end of the 13th over. 96 for 4 after 13. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Zain coming into bowl his last over. That's a full toss to start with just a single towards the long off.
Oh, and what a shot! That is a huge six. This is straight down the ground, out of the park. One of the best hits of the evening. Brilliant shot. This is. Just have a look at that. Coming down the track, and oh, and that was it. With disdain. Brilliant shot. Straight down the ground for a huge six. Absolutely stunning piece of batting there. That's the 100 up for AS Global in the 14th over. They need a lot of these shots from both the players. Rohan doing a wonderful job here. 29 of just 20 deliveries. Stunning bit of work there by Rohan. Superb batting by Rohan. He needs to stay there for long. Coming to bowl his next Zan. That's a good shot. Should just be a single. Oh, and he misses that. Could be a boundary, but there's a fielder out there. Coming back for the second chance of a run out there, but Rohan does well and comes back for the second easily. That's a good shot played towards the long off by Rohan. This guy means business. He's on 31 of 21 now. Zain bowling his last over. He's done well till now. Left arm spinner. This is his fourth, 3.3. Last three deliveries remaining. He needs to take an important wicket here. Rohan or Dhanraj. Whoever he takes. That should be a wide. And a quick single taken as well. So 2 runs added to the tally. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. He almost got in there. Appealing for the LBW, but probably the bat there. Just one delivery remaining in his spell. Another good delivery and a quick single taken. Chance of a run out there. But seems he is home. That's the end of. Beg your pardon, just one delivery remaining. There was a wide as well. So the last delivery of his spell. Zain completing his spell brilliantly. Just one delivery remaining. 13.5, 108 for 4. Oh, and this time a short delivery played really well towards the deep backward square leg. Will be a boundary. Wonderful shot by Rohan. He's on fire, this guy. Just have a look at the replay there. A short delivery played exceptionally well. Hooking it this time towards the deep backward square leg for a boundary, and that's the end of the 14th over. An expensive one by Zain. 112 for 4 after 14, and they need 90 more to win after 36 in 36 deliveries. So that's a big chase that they have to do. Almost 15 runs an over, exactly 15 runs for the next 6 overs will take them home. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. That's a good start.
by the off spinner again. Parag Doshi, this is his third over. That's a wonderful shot. This could be another one. And that's a good stop by the long on fielder. Just a single. That's a good throw as well. Parag Doshi. Oh, and this time in the air. In the skies there, and could have been a catch, but no chance for the fielder. That was in the safe zone. A couple of runs to Dhanraj there. When trying to hit the big one this time, sweeps well, will be a boundary. That's a good shot by Dhanraj again, and they are taking him on. Already 8 of the over in the first 4 deliveries. That's a good shot played towards the deep square leg for a boundary. And this time, another similar shot. This time, could it be a catch? No, and they don't take the second this time. Oh, and that's a misfield. And are they coming back for the second? No. So a lot of drama happening in that over, and that's another single added to the tally. And this time he's gone. Catch taken by Nikesh Patani, and Parag Doshi gets his first wicket. 121 for 5. That was not a very convincing shot by Rohan, and he eventually loses his wicket after playing a wonderful hand here. And the 5th wicket down on the score of 121. 121 for 5. And Parag Doshi finishes the over with a wicket, so that's a good end to the over by Parag. This was his third, and 15 overs have been bowled. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. That was a good catch taken by Parag. Beg your pardon, by Nikesh Patani on at the long on region. And we'll show you the replay before you go into the break. How Rohan was caught. Nikesh bowled Parag Doshi. That was a low full toss in trying to hit the big one, but missing that completely, and an easy catch to the long on fielder. Gleefully accepts that. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Last 5 overs to be bowled and allow us to switch to the Hindi commentary till the end of this innings. अहाद आ गए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर, बेहतरीन गेंदबाज हैं और क्या कैच लपका है इन्होंने आज का तो जो इनका कैच है वो शायद इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन कैच है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अपना अगला ओवर लेकर आ रहे हैं, तीसरा ओवर इनका और धनराज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वहां चूकते हुए, एक भी रन नहीं इस गेंद पर। 5 ओवरों में चाहिए 81 रन अभी भी जीतने के लिए इस मैच को, नामुमकिन सा लक्ष्य है ये। छोटी गेंद, बेहतरीन शॉट, क्या बड़ा शॉट है और ये कैच आउट है। जी हां, एक और विकेट यहां पर और अहाद जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इस बार बढ़िया छोटी गेंद डाली है। देखिए बाउंसर और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास धनराज का और बेहतरीन कैच डीप विकेट क्षेत्र में और पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। 121 पर 6 हो गया है स्कोर एस ग्लोबल का और बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में एक और विकेट गिरता हुआ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। तुरंत ही वापस आएंगे इस छोटे से विराम के बाद। और ये बढ़िया शॉट 1 रन के लिए खेला डीप पॉइंट के क्षेत्र में। आदित्य है नए बल्लेबाज, खाता खोला पहली गेंद पर इन्होंने। स्ट्राइक पर संदीप गडियार, वो भी नए बल्लेबाज ही हैं। आदित्य से पहले आए थे लेकिन खाता आदित्य ने पहले खोला है। संदीप की पहली गेंद अब हाथ डालेंगे। बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन यॉर्कर सीधे ब्लॉक होल में और तारीफ करनी होगी आहद की। जबरदस्त रनअप, बेहतरीन जंप, जबरदस्त एक्शन और फॉलो थ्रू भी उतना ही बढ़िया आहद का। एक संपूर्ण गेंदबाज हैं और युवा भी हैं, तेज तरार भी हैं और बहुत बेहतरीन गति भी है इनकी गेंदबाजी में। तो यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। 18.46 का रिक्वायर्ड रन रेट। तो ये मैच तो एक तरह से हाथ से जा ही चुका है। बढ़िया शॉट यहाँ पर संदीप का, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से यहाँ कुछ खास होना नहीं है। दूसरे रन के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे किए तेजी से भागकर संदीप गडियार ने अपना खाता भी खोला। स्वीपर कवर की तरफ बढ़िया शॉट खेला था, लेकिन 2 रन 1 रन से ज़्यादा कुछ होना नहीं है। आपको बड़े शॉट खेलने ही होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो, और छक्के चौके से ही मैच जीता जा सकता है। अब 18 से ऊपर का रन रेट इस मैच को जीतने के लिए। आहद की इस ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी और 1 ही रन इस बार स्वीपर की तरफ खेल कर लिया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 16 ओवर के बाद स्कोर 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 77 रन चाहिए 4 ओवरों में। 19 के ऊपर का हो गया रिक्वायर्ड रन रेट। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।
निकेश पटानी को गेंद थमाई गई है, उनका तीसरा ओवर। बढ़िया शॉट, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा हालांकि। मिड ऑन पर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और अच्छी गेंदबाजी भी, आक्रामक गेंदबाजी, आगे लिए हुए हैं क्षेत्ररक्षक। और ये कैच हो सकते थे, यहां पर छोड़ दिया। हाथ का आया मुंह ना लगा इसे कहते हैं। ये देखिए, फुल टॉस गेंद को अच्छी तरह खेल नहीं पाया आदित्य, लेकिन उससे भी बड़ी चूक हो गई यहाँ पर निकेश से। कॉटन बोल्ट का बहुत बेहतरीन चांस था, यहाँ पर मौका था, गंवा दिया। और ऐसे अवसर हमेशा नहीं मिलते हैं, तो एक विकेट निकेश ने अपने ही गेंद पर गंवाया है ये। अगली गेंद लेकर आते हुए संदीप गडियार स्ट्राइक पर, और बेहतरीन शॉट, जबरदस्त प्रहार और 6 रन। बड़ा छक्का ये, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला ये और आसानी से सीमा रेखा पार कर लिया। आप शॉट देखिए क्या बेहतरीन था। स्लोअर गेंद, हल्की गेंद डालने का प्रयास, स्लोअर डिलीवरी, बड़ा छक्का ये संदीप गडियार के बल्ले से। ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और आते ही एक नमूना पेश किया उन्होंने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी का। अगली गेंद लेकर आते हुए निकेश, बढ़िया गेंदबाजी, 1 ही रन मिलेगा। कवर्स पर कप्तान तपन मौजूद और 1 ही रन दिया वहां पर। और ये खराब गेंद, 4 रन के लिए इसे भेज दिया सीमा रेखा के पार। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए, फुल टॉस गेंद, वो भी पैरों पर, पैड्स पर डाली ये गेंद। भाग्यशाली रहे कि नो बॉल नहीं दी गई। अंतिम समय में डिप कर रही थी गेंद नीचे की तरफ, शायद इसलिए नो बॉल नहीं दी अंपायर ने। देखिए, आपको रिप्ले दिखाएंगे। जी हाँ, यही कारण था कि नो बॉल नहीं हुई ये गेंद। और अगली गेंद लेकर आते हुए निकेश, महंगा ओवर इनका। बेहतरीन शॉट, क्या शॉट है, और लेकिन हाथ में ये बेहतरीन कैच भी, बहुत ही बढ़िया शॉट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या कैच लिया है। कभी कभी अच्छे शॉट सीधे क्षेत्र रक्षकों के हाथ में जाते हैं, इस बार वही हुआ है। देखिए, बेहतरीन कैच, और इतना आसान कैच भी नहीं था, उन्होंने कैच को बनाया। फरहान शेख, जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।
और वापस आ गए हैं लाइव हितेंद्र गेंदबाजी करते हुए। संदीप गडियार का बड़ा शॉट यहाँ पर कोशिश, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र रक्षण खराब। 2 रन के लिए वापस आ गए संदीप। भारी किनारा लेकर थर्डमैन की दिशा में गई थी ये गेंद। 7 विकेट गिर चुके हैं 140 पर। 18वां ओवर शुरू हो चुका है। हितेंद्र डाल रहे हैं गेंदबाजी। बेहतरीन शॉट और ये बड़ा छक्का है। क्या शॉट है 6 रन के लिए। जबरदस्त प्रहार, बेहतरीन शॉट। और ये देखिए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में करारा प्रहार, 6 रन, जबरदस्त शॉट। मैच में अभी भी वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी है। अंत तक मैच को ना छोड़ना एक अलग ही तरीके की काबिलियत होती है और क्षमता जबरदस्त है इनकी, संदीप गडियार की। और मैच आप तब नहीं हारते हैं जब आप मैच के परिणाम को देखते हैं। मैच आप तब हारते हैं जब आप अपनी कोशिश करना कम कर देते हैं। बेहतरीन वापसी हितेंद्र की, अच्छी गेंद और डॉट गेंद छक्के के बाद। और ये एक और बेहतरीन शॉट, बड़ा छक्का हो सकता है ये। जी हां, बेहतरीन शॉट, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप गडियार। और इसी शॉट के साथ 150 भी पूरे हुए इस दल के। क्या पुल शॉट खेला है, वाह, तारीफ करनी होगी। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में बड़ा छक्का, जबरदस्त बल्लेबाजी। और 152 रन हो गया स्कोर 17.4 ओवरों में। सिर्फ 14 गेंदें बची हैं इस दूसरी पारी की और 50 रन चाहिए 14 गेंद पर। युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर 50 रन बनाए थे 2007 के विश्व कप में। T20 वर्ल्ड कप था वो। तो उस तरह का ही कुछ कारनामा करना पड़ेगा संदीप गडियार को यहाँ पर अगर मैच जिताना है अपने दल को। चौदह पर 50। हितेंद्र की अगली गेंद और संदीप गडियार बेहतरीन फॉर्म में 25 पर आ गए सिर्फ 10 गेंदों के बाद। एक और बेहतरीन शॉट यहां पर, क्या है चौका होगा? जी नहीं, एक ही रन। बढ़िया शॉट था लेकिन एक ही रन मिला डीप मिड विकेट पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण। कप्तान मनोज हैं स्ट्राइक पर। बढ़िया शॉट, बड़ा शॉट है ये, 6 रन। चौका है, माफ कीजिएगा। एक समय लगा ऐसा कि 6 रन हो सकता है, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी कप्तान मनोज की। और ओवर की समाप्ति बहुत ही धमाकेदार अंदाज में हुई है। आपको रिप्ले दिखा रहे हैं, देखिए 4 रन के लिए शॉट खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। जी हाँ, 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। और ओवर की समाप्ति यहाँ पर 18 ओवर में 157 रन स्कोर हो गया। सिर्फ 45 रन चाहिए 2 ओवरों में। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सिर्फ 45 रन चाहिए। जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, पिछले ओवर में बने 19 रन। आहत को गेंद थमाई गई है। सबसे बेहतरीन गेंदबाज आज के पूरे मैच में, सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने। और इनके ऊपर बड़ा दारोमदार कि ये 22.5 का जो रिक्वायर्ड रन रेट है, इस ओवर में तो उतने रन ना दें। संदीप गडियार ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन आहत को मार पाना इतना आसान नहीं। 26 पर आ गए हैं संदीप 11 गेंदों के बाद।
हाथ आए गेंदबाजी डालने, स्ट्राइक पर संदीप, और ये हवा में खिला हुआ बड़ा शॉट, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ, और ये कैच ले लिया हाथ ने, वाह बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र रक्षक है और ये आउट। हाथ की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और आते ही देखिए, और आकिब जावेद से बहुत ज्यादा मिलता है इनका एक्शन, हाथ सीधा आता है कान के पास से, आप देख सकते हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास संदीप का, लेकिन वहां पर बेहतरीन क्षेत्र रक्षण के चलते उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा, और क्षेत्र रक्षण किया भी किसने, खुद गेंदबाज ने, अहाद ने। क्या कैच लिया है, आप देखिए स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल कैच, लेकिन आसानी से ले लिया। इतने विपरीत भाग रहे थे अपने रनअप के, जबरदस्त यहाँ पर क्षेत्र रक्षण अहाद का, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम। और ये 8वां विकेट गिरता हुआ एस ग्लोबल का, 157 पर 8, 11 गेंदों पर अब चाहिए 45 रन। फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गगनचुंबी शॉट, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन कैच हाथ का। मयूर आए नए बल्लेबाज, सिर्फ 11 गेंदें बची हैं इस मैच में। और ये क्लीन बोल्ड, हाथ का 4था विकेट, वाह क्या गेंदबाजी करते हैं, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम। और 1 विकेट बचा है सिर्फ, इनके 5 विकेट के लिए, और 1 ही विकेट बचा है एस ग्लोबल का भी। तो अगर इस ओवर में आखिरी विकेट भी ले लेते हैं तो हाथ के 5 विकेट पूरे हो जाएंगे। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं हाथ, जबरदस्त गेंदबाजी, और हैट्रिक पर भी है अब। तो अब देखना है कि क्या अपनी हैट्रिक पूरी कर पाते हैं। क्लीन बोल्ड किया यहां पर बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप धराशायी। फिर से रिप्ले दिखाएंगे, पहली गेंद थी ये, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जबरदस्त गति के धनी है, बहुत बढ़िया रनअप, बेहतरीन एक्शन, आकिब जावेद की याद दिलाता है। पाकिस्तानी बॉलर थे, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर थे आकिब जावेद, और अहाद का एक्शन बहुत मिलता है आकिब जावेद से, लेकिन इनकी गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज, जितनी भी तारीफ की जाए कम इनकी। जय, और द सुपर लीग एक बेहतरीन प्रतियोगिता है, इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हमें देखने को मिले हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों की तरह ही हमें लगता है कि गेंदबाजी या बल्लेबाजी करते हैं। अहाद उनमें से एक हैं। पहले कुछ मैचेस में भी हमने बहुत बार ये कहा है खिलाड़ियों को देखकर कि किसी ना किसी खिलाड़ी का कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जैसा खेल होता है। वीरेंद्र शाह हैं गेंदबाज एथलेटिक कैंगरूज के, उनका एक्शन एंड्रू कैडिक की तरह मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता एक्शन अहाद का भी है आकिब जावेद की तरह, और गेंदबाजी भी बहुत ही ज़बरदस्त, उच्च स्तरीय गेंदबाजी। 4 विकेट ले चुके हैं 3.2 ओवरों में, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। और जितने बढ़िया गेंदबाज हैं उससे भी अच्छे ये क्षेत्र रक्षक हैं। क्या कैचेस लिए इन्होंने आज, और जो कैच इन्होंने मिड ऑन पे, लॉन्ग ऑन पर लिया था आज, तो मेरे ख्याल से इस पूरी प्रतियोगिता का पिछले 2 सालों का सबसे बेहतरीन कैच है। ऐसा कैच तो सपने में भी लोग नहीं पकड़ पाते हैं जो अहाद ने आज हकीकत में कर दिखाया। और ये हैट्रिक पर आखिरी विकेट के सामने, और ये खराब गेंद, पैरों पर डाल दिए गेंद, और 4 रन यहाँ पर मिल गए, खामियाजा भुगतना पड़ा। लेग बाइज हैं लेकिन चौका तो गया ही है। जी हाँ, ये थोड़ा सा अगर ऊपर रखते और सीधा गेंद डालते तो शायद यहाँ पर हैट्रिक भी हो जाती इनकी। और एक बार फिर से लेग स्टंप की तरफ गेंद, और 1 ही रन मिलेगा, और ये वाइड भी थी तो 2 रन यहां पर मिल गए। तो यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी खिलाड़ी की जमकर तारीफ करते हैं और वो उस गेंद के बाद ही गलतियां करना शुरू करता है, और अहाद ने भी इस बार ऐसा ही कुछ किया है पिछली 2 गेंदों पर। लेग स्टंप की तरफ दिशा जा रही है इनकी गेंदों की, और पिछली 2 गेंदें तो
बिल्कुल भी अच्छी नहीं जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे। देखते हैं क्या वापसी करते हैं। आखिरी विकेट बचा है और आहत को कोशिश करनी चाहिए कि इसी ओवर में समेट दें एस ग्लोबल के दल को। बढ़िया गेंदबाजी, लगभग यॉर्कर और 1 रन के लिए आते हुए यहाँ पर, लेकिन मना किया मिलन ने। नए बल्लेबाज हैं मनोज, कप्तान अभी भी स्ट्राइक पर। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह चूक गए यहाँ पर। बेहतरीन गेंदबाजी और 1 रन इस बार लिया आखिरी गेंद पर आहत का। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 विकेट लिए उन्होंने अपने 4 ओवरों में और 19 ओवर के बाद स्कोर है 164 रन 9 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन प्रदर्शन ये स्काई हॉक्स के खिलाड़ियों का। और आखिरी 6 गेंदें बची हुई हैं और अब ये मैच पूरी तरह से इनके हाथ से निकल चुका है। एस ग्लोबल को चाहिए 38 रन 6 गेंदों पर और 1 ही विकेट बचा हुआ है। छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। सुफियान शेख को गेंद थमाई गई है पहला ओवर डालते हुए अपना। स्ट्राइक पर मिलन, माफ कीजिएगा मनोज हैं स्ट्राइक पर। अच्छी शुरुआत, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। मिलन स्ट्राइक पर आते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर 1 रन लिया मनोज ने। और यहाँ पर लगता है हैमस्ट्रिंग खिंच गई है इनकी। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि सुफियान अगली गेंद नहीं डाल पाएंगे, कोई और आएगा गेंदबाजी करने आखिरी 5 गेंदों के लिए। जी नहीं, वापस आ रहे हैं, शायद खिंचाव आ गया था उनकी मांसपेशियों में। लेकिन जी हाँ, और नहीं डाल पाएंगे गेंद, ऐसा लग रहा है। कोई और आ रहा है गेंदबाजी डालने, केतफ को बुलाया है आखिरी ओवर डालने के लिए। 5 गेंदें बची हैं। सुफियान की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते अब ये ओवर पूरा करेंगे केतफ शाह। बढ़िया शुरुआत केतफ की, 1 ही रन मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 गेंदें बची हैं बस इस ओवर में और इस मैच में भी। ट्राई पर मनोज, केतफ की खराब गेंदबाजी है, वाइड गेंद। सिर्फ 4 गेंदें बची हैं और उसके बावजूद अभी भी अतिरिक्त रन आ रहे हैं। बढ़िया शॉट, शायद ये चौका होगा ऐसा लग रहा है। 4 रन की तरफ जाती हुई गेंद, 4 रन सीमा रेखा के पार। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बढ़िया शॉट खेला, छोटी गेंद, खराब गेंद और उसको उचित दिशा में खेलकर सही व्यवहार किया उसके साथ। 4 रन के लिए गेंद गई सीमा रेखा के पार। मनोज का बढ़िया शॉट। और अच्छी वापसी केतव की।
वाइड की अपेक्षा कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन वाइड तो नहीं थी ये। 2 गेंदें बची हैं इस पारी और इस मैच की। केतव शाह बढ़िया गेंदबाजी, लगभग एक यॉर्कर ब्लॉक होल में, और एक आखिरी गेंद बची है अब इस मैच की। 171 पर 9 बना लिए एस ग्लोबल ने, तो अच्छी बल्लेबाजी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि रन बहुत दे दिए उन्होंने, खास करके अगर वापस जाकर देखेंगे स्कोर शीट या स्कोर कार्ड तो कितने अतिरिक्त रन दिए हैं उन्हें पता चलेगा। शायद वही यहाँ पर अंतर हो गए इस मैच में दोनों दलों के बीच। और ये ओवर की समाप्ति और मैच की भी समाप्ति यहाँ पर 171 पर 9, 20 ओवर के बाद एस ग्लोबल इस मैच को 30 रनों से जीत लिया है स्काई हॉक्स ने। और हम सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस मैच को देखकर और हमारी कमेंट्री को सुनकर हमारा उत्साह बढ़ाया। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। एक अगले मैच में वापस जुड़ेंगे आपके साथ द सुपर लीग TSL में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि और धन्यवाद। एस ग्लोबल को स्काई हॉक्स ने आज 30 रनों से मात दे दी है TSL के एक बेहतरीन मैच में। फातिमा क्रिकेट ग्राउंड से मैं शालीन गुप्ता, आपका कमेंटेटर, आप सभी से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि और धन्यवाद।